A very warm welcome to all of you, and good afternoon, all the guests and members, ATF and DTF members who are viewing us through direct link as well as YouTube channel. This is day 4 of our academic task force and district task force training. Today we have session on developmental goal 2. It is a part 2 of the previous session that was conducted on 12th October, Wednesday. And for this session also, we have Professor Usha Sharma with us. All of you know her very well, but I'll just take 2 minutes to introduce her again. Professor Usha Sharma is a professor in Department of Elementary Education in NCRT and coordinator for FLN and in charge of cell of National Center for Literacy. She has more than 30 years of very rich experience in the field of teacher education, ECCE, early literacy, foundational literacy, and numeracy, and is also an editor for children's magazine, Firki Bachcho Ki, for grades 1 and 2 children by NCRT, and journal for teachers, Prathamik Shikshak. बच्चों की के कई उदाहरण उषा जी ने हमें पिछली बार भी दिखाए थे सत्र में, जो बहुत ही खूबसूरत रचनाएं थी जिसमें बच्चों की. And she has more than 60 publications and paper presentations to her credit. She has contributed majorly in NIPUN Bharat guidelines, Pade Bharat, Bade Bharat, and the training package of Nishtha, FLN, and also ECC. And I'm very honored to also say that I have also worked and learned under her and learned so many things from her. So we welcome you, Usha ji, to take this session on language 1 today, the first language. थैंक यू रीता. और इस वर्चुअल मोड पे जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जितने कलीग्स ने ज्वाइन किया है, उनको भी नमस्कार. जो हमारी आज की बातचीत रहेगी वो लैंग्वेज लर्निंग L1 के कॉन्टेक्स्ट में रहेगी. हाउ चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग और लैंग्वेज 1 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2. सो L2 का सेशन जो है वो प्रोफेसर संध्या साहू जी लेंगी. Professor Sandhya Sahu is from RI Bhubaneswar. She has also joined us for this session. तो जो मेरा सत्र है वो खास तौर से L1 के बारे में रहेगा, लैंग्वेज 1 के बारे में, और इस बारे में भी कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है. तो हमने जैसे पिछली सेशन में भी बात की थी कि जो लैंग्वेज 1 है वो बेसिकली मदर टंग है, और वो मदर टंग है जो लैंग्वेज बच्चों को अपने एनवायरनमेंट में मिलती है. तो जो भी लैंग्वेज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो हमारी L1 बन जाती, लेकिन सिर्फ लर्नर ही ये डिसाइड करता है कि उसकी L1 यानी कि लैंग्वेज 1 कौन सी है और L2 कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम में 33 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. 33 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन सिक्किम. लेकिन ज्यादातर जो फोकस है सिक्किम में वो इंग्लिश लैंग्वेज पर है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो एनवायरनमेंट है वो सिक्किम में अवेलेबल नहीं है. जौनती है, खासी है, लेपचा है, भूटिया है, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहाँ लोग आपस में कन्वर्स करते हैं. ये लैंग्वेजेस फैमिली में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, और बच्चे इससे ज्यादा फेमिलियर होते हैं. तो L1 वो लैंग्वेज है जो बच्चे अपने एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा सुनते हैं, जिन्हें लिसनिंग और स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं L1 के कॉन्टेक्स्ट में. क्योंकि केवल लैंग्वेज को सुनना या केवल लिसनिंग काफी नहीं है, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लैंग्वेज जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही हम लैंग्वेज पे कमांड हमारी बनती है. लैंग्वेज स्किल्स उतने हमारे बेटर होते हैं और हम एक इफेक्टिव लैंग्वेज यूजर के तौर पर उभर कर आते हैं. हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज. इसके लिए एक छोटा सा हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ. विनीता मैम, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर? आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ जी, नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं या उसको स्लाइड शो मोड पे प्रेजेंट कर सकते हैं. अब नजर आ रहा है? ठीक है. अगर विनीता मैम
सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी तो मैं कैमरा ऑफ कर लूंगी, ठीक है। जी जी श्योर। आज मैं अपने रूम से ही सेशन ले रही हूँ। तो हम ये बात कर रहे हैं कि L1 क्या है और L2 क्या है। तो लैंग्वेज क्या है? अगर हम लैंग्वेज क्या है या व्हाट इज लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, और या लैंग्वेज भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो या हम लैंग्वेज से नॉलेज गेन करते हैं। ये भी जब हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं लैंग्वेज के बारे में, तो वो लैंग्वेज का फंक्शन है कि लैंग्वेज क्या काम करती है। तो लैंग्वेज का फंक्शन है कि हम एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज का फंक्शन है कि हम नॉलेज गेन करते हैं, लैंग्वेज का फंक्शन है कि हम इन्फर करते हैं और जो अभी नहीं हुआ है उसके बारे में भी बातचीत करते हैं, कन्वर्स करते हैं, फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करते हैं। ये बेसिकली लैंग्वेज का फंक्शन है, ये लैंग्वेज का नेचर नहीं है। तो हम नेचर के बारे में पूछे व्हाट इज लैंग्वेज, तो वो डिफरेंट है। और लैंग्वेज अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न बिहेवियर। यानी कि हम कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, जिसे हम ट्राइबल लैंग्वेज भी कह देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि लैंग्वेज और डायलेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि जिसे हम डायलेक्ट कह रहे हैं, और जैसे लेपचा है, भूटिया है, खासी है, जौनती है, अगर इसे हम डायलेक्ट कह रहे हैं, या भोजपुरी है, मगई है, वज्जिका है, अंगिका है, ये बिहार की लैंग्वेजेस हैं, या फिर बारेली है, निमाड़ी है, कोरकू है, ये तमाम तरह की लैंग्वेजेस, या झारखंड में जो लैंग्वेजेस हैं, खड़िया है, हो है, खोटा है, संताली है, जो भी लैंग्वेज या जिस भी लैंग्वेज में हम आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्स करते हैं, वो एक रूल से बंधी हुई लैंग्वेज होती है, उसमें रूल होता है। अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कोई मीनिंगफुल बात नहीं कह पाएंगे, और जो बात कही जा रही है उसे हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज अपने आप में एक रूल गवर्न बिहेवियर है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियम के तहत ही लैंग्वेज काम करती है। अगर हम एक एग्जांपल लेते उषा हैं। जी सॉरी, एक रिक्वेस्ट आई है चैट पे कि हम सेशन को बाइलिंगुअल रखें, क्योंकि डीटीएफ मेंबर्स भी अटैच्ड हैं सदर्न स्टेट से, ठीक है, जिनको थोड़ा हिंदी में इसलिए दिक्कत हो मैंने सकती है। दोनों दोनों ही चीजें अपनी स्लाइड्स में रखी हैं, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि जो दिक्कत आती है इंग्लिश वालों की तरफ से कि हमें वो हिंदी में सेशन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी वाले कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते कि उनको अंग्रेजी में सेशन समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर संध्या साहू जो अपना सेकेंड हाफ लेंगी, वो यही बात को वो अंग्रेजी में कहेंगी, ठीक है विनीता। तो अभी जो बात समझ में नहीं आ रही है वो उसमें समझ में आ जाएगी, तब हिंदी वाले अभी समझ लें, इंग्लिश वाले तब समझ लें। तो हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम उसके दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो एक उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है और एक उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। एक उसका संरचनात्मक पक्ष है और एक उसका प्रकार्यात्मक पक्ष है। तो जब हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसका लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम एक बात कहते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि गधे ने मना कर दिया, ठीक है, या हाथी ने कहा गन्ना खा लो, ये सेंटेंस हम हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में हम कहते हैं द एलिफेंट सेड ईट शुगर केन, ठीक है। या फिर हमने कहा कि भालू ने कहा शहद खा लो, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं द बियर सेड हैव सम हनी, द डंकी रिफ्यूज, ठीक है। तो द डंकी रिफ्यूज का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो वर्ड्स आए हैं उनका अपना प्लेस एप्रोप्रिएट तरीके से है। यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे द डंकी रिफ्यूज्ड, तो ये सेंटेंस एक तरह का है जिसका एक स्ट्रक्चर है। रिफ्यूज्ड द डंकी आप ऐसे नहीं कह सकते, द डंकी रिफ्यूज आप इसी तरह से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। या गधे ने मना कर दिया, दिया ने मना गधा, आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में जो वर्ड्स आए हैं उनका अपना एक खास स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये रूल से बंधे हुए हैं। सेकेंड चीज है कि इंग्लिश और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है। तो राम
ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जा रहा है वर्ब है। ठीक है, तो एसओवी का प्रोसेस रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। राम स्कूल जा रहा है। अब इसी को हम जब इंग्लिश में कहते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, सो राम इज सब्जेक्ट, इज गोइंग वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो जो इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो इस तरह से आप अगर अंग्रेजी का भी एग्जाम्पल लेते हैं और हिंदी का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो ये पता चलता है कि हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर से बंधी हुई लैंग्वेज है। आप उसके वर्ड्स को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बांग्ला भाषा का एग्जाम्पल है। हम कहते हैं कि राम घर नहीं जाएगा, राम घर नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू होम। ठीक है, अब इसे बांग्ला में कैसे कहते हैं, राम बाड़ी जाबे ना, राम बाड़ी जाबे ना। तो ये जो ना है, जो नेगेटिव वर्ड है, वो बांग्ला के कंस्ट्रक्शन में लास्ट में आता है, राम बाड़ी जाबे ना। लेकिन जब हम हिंदी में कहते हैं तो वो बीच में आता है वर्ड, राम घर नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू होम। तो इस तरह से तीनों लैंग्वेजेस के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम व्हाट इज लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके बेसिकली हम दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, एक उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है और एक उसका फंक्शनल एस्पेक्ट है। फंक्शनल एस्पेक्ट हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये दो उसके एस्पेक्ट हैं। अगर हम सेंटेंस के बाद हम वर्ड्स पे पहुंचते हैं तो वर्ड्स को भी फॉर्म करने के बेसिक रूल होते हैं। तो इसलिए जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि जो लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है उस लैंग्वेज का ग्रामर हम कभी भी याद नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं उसे। और वो लैंग्वेज जो हम सुनते हैं तो हमारे पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके जरिए हम ग्रामर को लगातार सीखते चले जाते हैं। और ये हम आगे एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू देखते हैं। ये स्टोरी है मिठाई, और इसमें दो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहे हैं, एक है गधा और एक है मिठाई। एक दिन गधे का मन मीठा खाने को हुआ। गधे ने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चीते ने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा, गधे ने मना कर दिया, गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो, गधे को ये बात पसंद आ गई, सब मिठाई खाने चल पड़े। ये जो स्टोरी है उसमें दो तरह के सेंटेंस बार बार आते हैं। तो ये जो रेपिटेशन है सेंटेंस का, उससे हम एक खास तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को पकड़ लेते हैं। जैसे भालू ने कहा, खरगोश ने कहा, चीते ने कहा, हाथी ने कहा और गधे ने मना कर दिया। तो ये इस स्टोरी को पढ़ते हुए ये जो रेपिटेशन है, भालू ने कहा शहद खा लो, और खरगोश ने कहा गाजर खा लो, चीते ने कहा गुड़ खा लो, हाथी ने कहा गन्ना खा लो और फिर गधे ने मना कर दिया। जब इस तरह के रेपिटेटिव सेंटेंस हमारे स्टोरी बुक में आते हैं तो बच्चे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पकड़ते हैं कि भालू ने कहा। ये रेपिटेशन के बाद जब सेकंड ऑब्जेक्ट आता है हमारे सामने तो वो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं कि चीते ने कहा, और जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें नजर आते हैं स्क्रीन पर वो कहते हैं कि चीते ने कहा गुड़ खा लो, या अगर हाथी है तो हाथी ने कहा गन्ना खा लो। तो इस तरह से हम जितना ज्यादा हम लैंग्वेज को सुनते हैं, जितना ज्यादा हम लैंग्वेज या चिल्ड्रंस लिटरेचर को पढ़ते हैं, और तो धीरे धीरे वो जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उस पर हमारी पकड़ बनती चली जाती है। गधे ने मना कर दिया, ये सेंटेंस बार बार आता है।
अगर हम इसी कहानी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। Once a donkey wanted to eat something sweet. He asked his friend for something sweet to eat. The bear said, "Have some honey." The donkey refused. The rabbit said, "Have some carrots." The donkey refused. तो हम जब इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो दो रेपिटेटिव सेंटेंस हमारे पास हैं। The bear said, "Have some honey." The donkey refused. गधे ने मना कर दिया। The rabbit said, "Have some carrots." The donkey refused. अब अगर हम एक ऐसी तस्वीर देखते हैं, ये द एंट सेड हैव सम जैगरी, द डंकी रिफ्यूज्ड। द स्क्विरल ऑफर्ड अ मैंगो, द डंकी रिफ्यूज्ड। और जब हम हाथी की तस्वीर देखते हैं तो फिर आता है कि द एलिफेंट सेड हैव सम शुगर केन, तो डंकी रिफ्यूज्ड। तो इस तरह से स्टोरी में जो रेपिटेटिव वर्ड्स या सेंटेंस आते हैं, हम अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जरिए इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को पकड़ते हैं, रूल बनाते हैं और रूल को फॉलो करते हुए हम अपनी लैंग्वेज को और बेटर बनाते चले जाते हैं। ये जो ग्रामर है वो एक कॉन्टेक्स्ट में आया है और उस कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं कन्वर्सेशन। यानी कि आपको डिस्कोर्स में एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है जहां पर हम तरह तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम ये रूल को फॉलो करते हैं। जब हम और लैंग्वेज सुनते हैं तो फिर हम उस लैंग्वेज के रूल्स को और बेटर बनाते चले जाते हैं, उसको भी एक्सपैंड करते हैं या उसमें चेंजेस करते हैं। ये तो था हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। भालू ने कहा शहद खा लो, खरगोश ने कहा गाजर खा लो, चींटी ने कहा गुड़ खा लो। अब अगर हम इस स्टोरी को देखते हैं तो हमारे पास ये जो वर्ड्स आए हैं, गधा, मिठाई, खा, लो, हाथी, खरगोश, कहा, ने। और जब हम अंग्रेजी में इस स्टोरी को देखते हैं तो हमारे पास वर्ड्स आते हैं डंकी, स्वीट, एलिफेंट, एंट। इस तरह के वर्ड्स बार बार आते हैं। तो ये जो डंकी वर्ड है, द डंकी सेड नो, द डंकी रिफ्यूज्ड, द डंकी रिफ्यूज्ड अगेन। तो जब हम इस तरह से स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये जो डंकी वर्ड है वो धीरे धीरे उसकी जो विजुअल मेमोरी है वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। यानी कि हम साउंड सिंबल एसोसिएशन डेवलप करते हैं और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने स्टोरी के शुरू में पढ़ा था। ये है, एक ही सेंटेंस बार बार आता है, गधे ने मना कर दिया। तो जो देवनागरी स्क्रिप्ट से फेमिलियर नहीं है उनके लिए गधे ने मना कर दिया ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो एक तरह की इमेज है। वो इसे पढ़ नहीं पाएंगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ इमेज के तौर पर देखेंगे। और अगर कोई भी टीचर उंगली रखकर इस सेंटेंस को पढ़ती है, गधे ने मना कर दिया, तो जो बच्चे हैं वो साउंड सिंबल एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं। गधे शब्द के वर्ड के साथ गधे की साउंड को वो एसोसिएट करते हैं। इसी तरह से मना शब्द के साथ वो मना की जो तस्वीर है उसे एसोसिएट करते हैं। तो ये साउंड सिंबल एसोसिएशन लगातार डेवलप होता है। जैसे हमने अंग्रेजी में देखा, द डंकी रिफ्यूज्ड, द डंकी सेड नो, द डंकी रिफ्यूज्ड अगेन। तो इस तरह से जब बार बार डंकी की इमेज के साथ डंकी वर्ड आता है तो हम इन दोनों में एसोसिएशन डेवलप करते हैं कि जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, डंकी की जो पिक्चर है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो बेसिकली उसका नाम है। इस तरह से ये साउंड सिंबल एसोसिएशन डेवलप होता है। तो हम डंकी की तस्वीर देखकर हम पूरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डंकी या गधा या फिर गधे। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस है। जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम मात्रा की बात कर रहे हैं, एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, जबकि इंग्लिश में हम मात्रा या स्पेलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां हम सीधा लेटर्स को एक लाइन में लिखते चले जाते हैं, जबकि जब हम देवनागरी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कुछ मात्राएं ऊपर होती हैं और कुछ मात्राएं नीचे होती हैं। तो डंकी रिफ्यूज अगेन, इससे हम डंकी वर्ड पे पहुंचते हैं और फिर हम ये पूछ लेते हैं कि जो डंकी वर्ड है इसमें जो इनिशियल साउंड है वो किसकी साउंड है, वो डी की साउंड है। ठीक है, तो फिर वो डी है, फिर ओ एन के ई वाई। इस तरह से हम एक पूरे एक मीनिंगफुल टेक्स्ट, एक मीनिंगफुल स्टोरी के जरिए हम पहुंचते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस के बाद हम पहुंचते हैं वर्ड्स पर और वर्ड्स के बाद हम पहुंचते हैं लेटर पर। तो ये प्रोसेस इस तरह से रहता है।
हम अगर और आगे चलते हैं तो हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, हाथी ने कहा गन्ना खा लो। बहुत सारा कंफ्यूजन ये भी रहता है कि जो संयुक्त व्यंजन है, अगर हम हिंदी का एग्जांपल ले रहे हैं तो आधा ना है और पूरा ना है, जबकि शुगर केन उसमें कोई भी साउंड आदि नहीं होती है। राइटिंग में हर साउंड को हम पूरा पूरा ही लिखते हैं। शुगर केन को लिखेंगे तो शुगर में जितने भी लेटर्स आए हैं हम सबको पूरा लिखते हैं, जबकि हिंदी में, हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट में हम शब्द के हिसाब से साउंड्स को हम आधा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हाथी ने कहा गन्ना खा लो, तो यहाँ पर आधा ना है और फिर पूरा ना है। तो इस तरह से हम गन्ना वर्ड को देखते हैं तो लगेगा कि यहाँ हम संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये जो बच्चे गन्ना को बार बार सुनते हैं, या जो बच्चे गन्ना शब्द को बार बार लिखा हुआ देखते हैं, या जो बच्चे जिनके आसपास शुगर केन है, उसके लिए गन्ना वर्ड डिफिकल्ट नहीं है। तो सेकंड लर्निंग हमारी ये रहती है कि वर्ड्स ना तो डिफिकल्ट होते हैं ना इजी होते हैं। जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ज्यादा सुनते हैं, जिन्हें ज्यादा बोलते हैं, जिन्हें ज्यादा इस प्रयोग में लाते हैं, वो वर्ड्स बहुत फेमिलियर हो जाते हैं और इसलिए वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। जबकि जो वर्ड्स हम नहीं सुनते हैं, भले ही वो बहुत छोटे शब्द हों, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब हम एक और वर्ड की बात करते हैं और ये शब्द है हमारे पास चूक। ठीक है, तो चूक है या चक है, या फट है या पट है, इस तरह की जो साउंड्स वाले वर्ड हैं ये डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि हम ये यूजुअली नहीं सुनते हैं। या धप शब्द है, धप, धप में ध है और प है, सिर्फ दो लेटर्स का ये वर्ड है धप, लेकिन हम इसे ज्यादातर अपने एनवायरनमेंट में सुनते नहीं है, तो ये इन्हें अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स या जो लैंग्वेज, जो सेंटेंस जो हम अपने एनवायरनमेंट में लगातार सुनते हैं, धीरे धीरे वो सारे वर्ड्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी वोकैबुलरी में स्टोर हो जाते हैं और वो मीनिंग के साथ स्टोर होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि खा लो, तो खा लो का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हम इसे इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। खा लो, घर में अगर मदर या माँ ये कहती हैं कि खीर खा लो, या केला खा लो, या सेब खा लो, तो हम, या हमारा ब्रेन, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है वो ये कहती है कि ब्रेन कहीं भी वर्ड्स को इजी या डिफिकल्ट के फॉर्म में रिसीव नहीं करता है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में उसे रिसीव करता है। तो जो लो साउंड है, ल और उस पे ओ की मात्रा है, तो हमारा ब्रेन इस लो को पूरा परसीव करता है। जो विजुअल मेमोरी है उसमें गन्ना, कहा, ने, हाथी, लो, ये सब वर्ड्स एक साथ ही स्टोर होते चले जाते हैं। तो ब्रेन कहीं भी हाथी को तोड़ता नहीं है, वो डिवाइड नहीं करता है कि हा अलग है और थ अलग है। ब्रेन कहीं भी हा को भी अलग नहीं करता है कि ह अलग है और आ की मात्रा अलग है। और ये किसी भी उस लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है जिसमें हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो साउंड्स हैं उसके सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये साउंड और सिंबल वाला जो मामला है, पूरा इशू है, वो इंग्लिश में नहीं है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जहां हम हर साउंड को अलग अलग लिखते हैं। जैसे अगर हमने कहा सेड, तो SAID, हम हर लेटर को लिखते हैं सेड, SAID, लेकिन जब हम कहा लिखते हैं तो क लिखते हैं, ह लिखते हैं और आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आ की जो साउंड है उसका जो सिंबल है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेजेस भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, सिलेबल लैंग्वेजेस और नॉन सिलेबिक लैंग्वेजेस। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे या जो हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, तो हर लैंग्वेज के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और उसमें पहला फीचर आता है कि लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के पैटर्न पर है या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर है। ठीक है, तो जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये दो डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हमारे सामने हैं, जिसमें हिंदी में है राम घर, राम स्कूल जा रहा है,
राम इज गोइंग टू स्कूल, तो SOV स्ट्रक्चर है या SVO स्ट्रक्चर है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। इसके बेस पर हम किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को गलत या सही नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से हाथी ने कहा गन्ना खा लो, या खरगोश ने कहा गाजर खा लो, या भालू ने कहा शहद खा लो। इसमें बच्चे जब ये बार बार इस स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं, उंगली रख कर पढ़ते हैं, यानी कि रीड अलाउड सेशन होता है, तो ये साउंड सिंबल एसोसिएशन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। हम जब आपस में बोलते भी हैं तो भी हम पूरे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पूरी बात कहते हैं कि एक दिन एक गधे का मन मीठा खाने को हुआ, उसने अपने दोस्तों से कुछ मीठा खाने को मांगा। हम ये पूरी बात कहते हैं, बच्चे भाई बहुत छोटे हो तो भी हम ये पूरी बात कहते हैं। तो जब हमारा सुनना बोलना पूरी बात में होता है, और क्योंकि मीनिंग तभी आता है, पूरी बात के बिना कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, और कॉन्टेक्स्ट ना मिलने की वजह से हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी है कि हमें कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट पता हो, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पर हम जो बात कही जा रही है हम उसे सुन सकते हैं। तो जब एक दादी अपने पोते से, या ये जो ग्रैंड मदर है अपने पोते से बात करती है कि एक दिन की बात है कि मैं सो रही थी, अचानक चोर आ गए, या अचानक से छत टपकने लगी, या फिर पानी भर गया, और फिर मैंने देखा तो दरवाजे पे कोई खड़ा था, दरवाजे पे आवाज हुई। हम बहुत छोटे बच्चों के साथ ये पूरी बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे जो बच्चों का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो उस लैंग्वेज को के कंस्ट्रक्शंस को पकड़ने लगता है, और वो अपना रूल खुद बनाते हैं, जिसे चॉम्स्की बोलते हैं ग्रामर। जो जो एक बेसिक ग्रामर हम अपना स्मॉल ग्रामर बना लेते हैं, और जैसे जैसे हम और बातें सुनते हैं उस लैंग्वेजेस में, हम उस ग्रामर को एनहांस करते चले जाते हैं। तो इस तरह से एक कोई कहानी है या कोई बात है, वो हमें रीडिंग राइटिंग की तरफ ले जाती है। तो रीडिंग राइटिंग के लिए ओरल लैंग्वेज का होना जरूरी है। ओरल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, उसके बाद हम रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं। एक बात हम और इसमें जोड़ना पसंद करेंगे, और या शायद आपको भी ये पता होगा कि जो हमारा ब्रेन है उसमें एक पिक्चर और उस पिक्चर की आवाज, ये दोनों एक साथ स्टोर होते हैं। अगर किसी एक पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ कोई भी साउंड एसोसिएटेड है, तो हम उस तस्वीर को देखकर तुरंत उस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं एक हाथी की तस्वीर है, एक एलिफेंट की तस्वीर है, तो हम तुरंत कह देंगे एलिफेंट। या जो बहुत छोटा बच्चा है जो एलिफेंट से फेमिलियर है, और किसी बड़े ने, किसी एल्डर पर्सन ने हाथी की तस्वीर को, एलिफेंट की तस्वीर को देखकर कहा कि वो देखो एलिफेंट जा रहा है, तो बच्चे का ब्रेन तुरंत वो जो तस्वीर में दिख रहा है एलिफेंट, या जो सामने एलिफेंट नजर आ रहा है, उसकी जो इमेज है वो, और उसके साथ जो साउंड एसोसिएटेड है हाथी या एलिफेंट, वो उसे एसोसिएट कर लेते हैं। ब्रेन हमेशा पूरे वर्ड को लेता है, वो उसके टुकड़े नहीं करता है कि हाथी में हा है और थी है, वो ऐसे डिवीजन नहीं करता है, हिज्जे नहीं करता है, वो एक कंप्लीट वर्ड लेता है। तो हमारे ब्रेन में जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो अपने आप में कंप्लीटली आते हैं, यानी कि कंप्लीट तरीके से आते हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आते हैं कि हा अलग है और थ अलग है, और ई की मात्रा अलग है और आ की मात्रा अलग है, ऐसा नहीं होता है। हमारे ब्रेन ने जो कैप्चर किया है वो हाथी की तस्वीर के साथ हाथी वर्ड को कैप्चर किया है, तो हाथी शब्द पूरी तरीके से ब्रेन में आता है। ये पूरा जो प्रोसेस है वो लैंग्वेज वन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और लैंग्वेज वन में हम बहुत ही नेचुरल तरीके से और बिना एफर्ट्स लगाए, एफर्टलेस तरीके से हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं। एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो तब होता है जब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हमारे आसपास होती है, और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, और आप ना भी चाहें तो भी आप जिस लैंग्वेज एनवायरनमेंट में रहते हैं उस लैंग्वेज को आप धीरे धीरे एक्वायर करते चले जाते हैं। इसलिए मदर टंग में जो हमारे आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फिनोमिना हैं, वो सब हमारी मदर टंग में ही बनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो एलिफेंट है या शुगर केन है या डंकी है या एंट है या रैबिट है या कैरेट है या मैंगो है,
गिलहरी है, आम है, ये तमाम तरह की जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, हम उसके लिए अपनी मदर टंग के साउंड्स को या वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये लैंग्वेज वन है। अगर मान लीजिए कि एक और लैंग्वेज है जो उतने ही अमाउंट में अवेलेबल है जितने अमाउंट में हमारी मदर टंग अवेलेबल है, तो बच्चों की एक से ज्यादा मदर टंग हो सकती हैं। और बच्चों की एक से ज्यादा मदर टंग तब होंगी जब वो दो लैंग्वेजेस इक्वल अमाउंट में बच्चे के एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगी। जैसे कुछ स्टेट्स में बच्चे हिंदी भी सुनते हैं, अंग्रेजी भी सुनते हैं, और उन दोनों लैंग्वेजेस पे उनकी कमांड होती है। या बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां वो तमिल भी सुनते हैं और हिंदी भी सुनते हैं। या बिहार में वो खड़ी बोली हिंदी भी सुनते हैं और भोजपुरी भी सुनते हैं। तो या फिर वो सिक्किम में हिंदी भी सुनते हैं और भूटिया लैंग्वेज भी सुनते हैं। तो जितनी लैंग्वेजेस हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं, वो हमारा L1 का हिस्सा हो सकती हैं, यानी कि लैंग्वेज वन या फर्स्ट लैंग्वेज का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने वाला जो मेजर फैक्टर है वो है लर्नर, चाइल्ड। ये बच्चा डिसाइड करेगा कि उसकी L1 कौन सी है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा वो प्रोफिशिएंट है, और कितने लैंग्वेजेस को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सुनकर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लैंग्वेजेस को सुनते हैं और हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ऐसे डिपेंड करता है एक्सप्रेशन का मामला कि हमें कितनी तरह की अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती हैं उस लैंग्वेज में डिस्कोर्स करने के लिए। तो धीरे धीरे बच्चे जितनी लैंग्वेजेस से फेमिलियर होते चले जाते हैं, और जितना वो चिल्ड्रंस लिटरेचर पढ़ते हैं, जितना वो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उतना ही उनकी लैंग्वेज वन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। हम एक स्टोरी और देखते हैं, और इंग्लिश की स्टोरी जो इसमें है वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। समथिंग स्वीट करके स्टोरी है। हमने ये देखा था कि जब हम गधे की कहानी पढ़ रहे थे, भालू ने कहा, खरगोश ने कहा, चींटी ने कहा, हाथी ने कहा, गधे ने कहा, मना कर दिया। तो हमने इतने सारे वर्ड्स भी पढ़े हैं। हमने इतने सारे वर्ड्स की इमेज बनाई है, गधा, मिठाई, खा, लो, हाथी, खरगोश, कहा, ने, यानी कि जितने भी वर्ड्स उस सेंटेंस में आए हैं और बार बार आए हैं। तो ये जो रेपिटेटिवनेस होती है किसी भी स्टोरी में, ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पकड़ने पर या उसकी कमांड बनाने में मदद करती है। इसलिए हम एक मीनिंगफुल तरीके से रेपिटेटिव स्टोरीज पर या रेपिटेटिव सेंटेंस के साथ जो स्टोरीज बनती हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम इन वर्ड्स को लेटर्स पे देखते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ कि जो पहला शब्द है गधा, ठीक है, ये गधा पहला शब्द है, तो इसमें फर्स्ट साउंड कौन सी है, पहली आवाज कौन सी है, ग। फिर दूसरी आवाज कौन सी है, धा। तो बच्चा ऐसे इस तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकता है। हम इसके और आगे चलेंगे तब ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो हमने अलग अलग अक्षरों की पहचान भी करवा ली, ग, धा, ने, ग, धा, ने, खा, लो, हा, थी, क, हा, ने, ठीक है। अब हमारा ब्रेन कहीं भी इसकी मात्राओं को सेग्रीगेट नहीं करता है कि ध में आपकी मात्रा है। ये इंग्लिश के लिए एप्लीकेबल नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि डंकी में कोई भी सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, वहाँ वॉवल्स कंप्लीटली लिखे जाते हैं अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन हिंदी में हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जहाँ ओरिजिनली हम वॉवल्स को नहीं लिखते, उसकी सिर्फ साउंड्स को एसोसिएट करते हैं। इसलिए हर तरह का जो टीचिंग लर्निंग पैटर्न है, वो कोई एक पैटर्न, कोई एक पेडागोजी, कोई एक मेथोडोलॉजी सभी लैंग्वेजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम ये आगे देखते हैं, एक और स्टोरी हमारे पास है, लालू और पीलू। एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे, एक का नाम था लालू और एक का नाम था पीलू, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये जो आप एक वर्ड देख रहे हैं मुर्गी, ये वर्ड मुर्गी देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ऊ की मात्रा है, फिर ई की मात्रा है, फिर ऊपर र भी है, तो ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट वर्ड होगा। लेकिन नहीं, वो बच्चे जो मुर्गी से फेमिलियर हैं, जो हैन से फेमिलियर हैं,
वो इस मुर्गी को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंग्लिश में हमारे पास हैन इसके लिए वर्ड है, लेकिन मुर्गी इसके लिए हिंदी में हमारे पास शब्द है। तो जो बच्चे बार बार मुर्गी को देखते हैं और मुर्गी लिखा हुआ देखते हैं, तो जो मुर्गी की तस्वीर है, ये जो हैन की तस्वीर है और इसके जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मुर्गी, वो इसकी जो लिखी हुई आवाज है वो और इस मुर्गी तस्वीर में वो साउंड सिंबल एसोसिएशन डेवलप करते हैं। तो एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे, एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। तो लालू में और लालू लाल में जो साउंड रिपीट हो रही है वो है ल, और पीलू पीली चीजें खाता था, जो साउंड रिपीट हो रही है वो है प। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ लालू ने वह पीले पीले गुड़ लाया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। तो अब इस पूरी स्टोरी में जो साउंड या जो वर्ड्स बार बार आए हैं वो है शब्द मुर्गी, लालू, पीलू। और जो साउंड्स बार बार आती हैं वो है म, वो है ग, वो है ल, वो है प। जो मात्राएं बार बार आती हैं, जो वॉवल्स बार बार आते हैं वो है आ और वो है ऊ। ठीक है। तो इस स्टोरी के जरिए हम और आगे क्या कर सकते हैं, तो पहले तो इस स्टोरी पे बात करना बहुत जरूरी है कि एक टीचर जब एक चिल्ड्रंस लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करती है क्लास में, रीड अलाउड का सेशन होता है, या वो टेक्स्ट से पढ़कर भी नहीं कहानी सुनाए, वो कहानी को ऐसे ही बता दे, यानी कि स्टोरी टेलिंग का सेशन होता है, तो उसके बाद ओरल लैंग्वेज पर आना जरूरी है। तो अब हम बातचीत करते हैं बच्चों से। अच्छा बताओ कि मुर्गी के कितने चूजे थे, एक, दो या तीन? तो मुर्गी के कितने चूजे थे, दो। और ये जो हमारा सिंबल आ रहा है वो आ रहा है तीन पर, यानी कि ये रॉन्ग आंसर है, मुर्गी के दो चूजे थे। हमारा फिर अगला सवाल शुरू हो जाता है, उन चूजों का क्या नाम था? पीलू और कालू, लालू और कालू, लालू और पीलू। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है लालू और पीलू। हमारे पास नेक्स्ट सवाल होता है, लालू क्या खाता था? लाल चीजें, पीली चीजें, मीठी चीजें। तो हमारे पास जो जवाब है वो है लाल चीजें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, पीलू क्या खाता था? लाल चीजें, पीली चीजें, मीठी चीजें। तो हमारे पास जवाब आएगा पीली चीजें। लालू कौन कौन सी चीजें खा सकता है? टमाटर, गाजर, गुड़, मूली, दाल चावल। यहाँ पर हम कलर्स की बात करें, अगर लालू लाल रंग की चीजें खाता है तो लाल रंग की चीजें कौन सी है? टमाटर और गाजर। तो हमारा आंसर रहेगा टमाटर और गाजर। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लालू क्यों रोने लगा? मिर्च खाने से जलन ठीक होने लगी, पीलू ने उसका गुड़ छीन लिया था, उसे मुर्गी माँ की याद आ रही थी, उसे मिर्च खाने से जलन हो रही थी। तो उसका राइट आंसर है फर्स्ट। लालू की जलन कैसे ठीक हो गई? मिठाई खाने से, हलवा खाने से, गुड़ खाने से। तो गुड़ खाने से, ये राइट आंसर है, ग आंसर ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, अगर मुर्गी के दो और बच्चे होते, ठीक है, तो जैसे हिलू और सफेलू, मुर्गी के दो बच्चे पहले थे लालू और पीलू, और लालू खाता था लाल रंग की चीजें, पीलू खाता था पीले रंग की चीजें। मान लीजिए कि अगर मुर्गी के दो और बच्चे होते, हिलू और सफेलू, तो वे क्या खाते? खीरा और मूली, प्याज और नींबू, नींबू और आलू। तो हिलू खाते हरे रंग की चीजें, सफेलू खाता सफेद रंग की चीजें, और उसका राइट आंसर है खीरा और मूली। आपको कौन कौन सी चीजें खाने से मिर्ची लगती है?
और आप मिर्ची की जलन शांत करने के लिए क्या क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, और आपको खाने में क्या पसंद है। तो ये जो अभी हमने लालू और पीलू स्टोरी सुनी, और इस स्टोरी के बाद हम ओरल लैंग्वेज पे आते हैं, जहाँ हम कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चों से जो पूरी तरह से स्टोरी पर बेस्ड हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे और एक अनुमान लगाने में मदद करते हैं। जैसे आपको कौन कौन सी चीजें खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, ठीक है, या फिर आप मिर्च शांत करने के लिए क्या खाते हैं, या आपको खाने में क्या पसंद है। तो लालू और पीलू की स्टोरी से हम आते हैं बच्चों के अपने एक्सपीरियंसेस पर, बच्चों की अपनी पसंद नापसंद या लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर आते हैं, या फिर उनके अपने एक्सपीरियंसेस पर आते हैं। तो किसी भी स्टोरी के बाद हमें ओरल लैंग्वेज के जरिए लिसनिंग स्पीकिंग के दोनों स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें बच्चों के लाइफ के जो रियल एक्सपीरियंसेस है उन तक आना होगा। या इससे पहले वाला जो सवाल था हमारे पास, ये अनुमान लगाने के लिए है, वो इन्फर करने के लिए, या इमेजिनेशन का सवाल है कि अगर मुर्गी के दो और बच्चे होते तो आप उनका क्या नाम रखते, या दो बच्चे थे हीलू और सफेलू तो वो क्या खाते। तो इस तरह से हमारे जो सवाल हैं वो हमारी स्टोरी पर बेस्ड होंगे, और कुछ स्टोरी से हमें आगे ले जाने वाले होंगे। तो कुछ में इमेजिनेशन है और कुछ में वो इन्फर करेंगे अच्छा वो क्या खा सकते थे, और अपने अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस को उस स्टोरी के साथ कोरिलेट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम आते हैं अपने सेकंड फेज पर, और वो सेकंड फेज है एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे। ये सवाल हमारे सामने है। तो एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे, हमने इस टेक्स्ट को बार बार इस्तेमाल किया है। तो हमारे सवाल क्या हो सकते हैं कि मुर्गी में शुरू की आवाज क्या है। कोई बच्चा बोल सकता है मुंह, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं मुर्गी, ठीक। मुर्गी में शुरू की आवाज क्या है, मुंह। या कोई बच्चा बोल सकता है म। अच्छा, म से और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो ये जो म साउंड है, ये बच्चे साउंड से फेमिलियर हैं, ये साउंड वो इस्तेमाल करते हैं और सुनकर वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो म से और कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, तो बच्चे बोल सकते हैं माला, माली, मेरा, मेरी, मैंने, मैं, मकान। ऐसे बहुत सारे शब्द बच्चे बोल सकते हैं। आपके किन किन दोस्तों के नाम में म की आवाज है। अब हम म साउंड पर आए हैं। तो हमने स्टोरी से स्टार्ट किया, स्टोरी से हम ओरल लैंग्वेज पर आए, ओरल लैंग्वेज के बाद हम अब साउंड रिकॉग्निशन पर आए हैं। और हमने फिर से वो टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे। तो म में, मुर्गी में जो इनिशियल साउंड है वो कौन सी है। और इनिशियल साउंड के बाद हम उन्हीं से बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शुरू में म की आवाज है। और फिर हम उनके अपने पर्सनल लाइफ पर आते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि आपके किन दोस्तों के नाम में म की आवाज है। तो हमने जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो सेकंड क्वेश्चन है म साउंड को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। और जो थर्ड है कि उसके शुरू में कौन सा है। और हम सेकंड में आते हैं कि उसके शुरू में, यानी कि शब्द के शुरू में कौन सी आवाज है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ म साउंड के लिए है। हमारे बीच शोभा देवी जी हैं जो बार बार एनोटेशन रिक्वेस्ट करें, प्लीज आप ये मत कीजिए। तो और हमारे किन दोस्तों के नाम में म की आवाज है, तो हम ये करते हैं कि हमारे जो अब हम इसमें इनिशियल प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो म कहीं भी आ सकता है साउंड में, वर्ड में, वो शुरू में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। तो किसी भी साउंड की किसी भी वर्ड में तीन पोजीशंस होती हैं। एक है उसकी इनिशियल पोजीशन, एक है मिडिल पोजीशन, और एक है लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो मुर्गी में म जो है वो इनिशियल पोजीशन है, कमल में म मिडिल पोजीशन है, और आम में म लास्ट पोजीशन है। तो म डिफरेंट प्लेस पे आता है। एक मुर्गी थी, इस वाक्य में कितने वाक्य आए हैं। एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे हैं, इसमें कितने सेंटेंस हैं, इसमें दो सेंटेंस हैं। अब हम यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सेंटेंस होता कैसे है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ वर्ड्स को एक लाइन में लीनियर फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस की वो है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो पड़ती है हमारे
विराम चिन्हों से, हम जो पंक्चुएशन मार्क बनाते हैं उससे हम ये काम करते हैं। तो एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे, तो इसमें कितने वाक्य आए हैं? तो इसमें दो वाक्य हैं, इसमें कितने शब्द आए हैं? तो एक मुर्गी थी, इस सेंटेंस में तीन शब्द हैं, तीन वर्ड्स हैं, एक मुर्गी थी। एक शब्द में कितने अक्षर हैं? तो एक शब्द में दो अक्षर हैं, ए और क। तो हम स्टोरी से सेंटेंस पर आए, सेंटेंस से हम वर्ड्स पर आए, वर्ड से हम लेटर पर आए हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रीडिंग के लिए रहता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू। लालू में शुरू में कौन सी आवाज है? लालू में कौन कौन सी आवाजें हैं? पीलू में कौन कौन सी आवाजें हैं? तो लालू में दो आवाजें हैं, ला लू। पीलू में कौन सी आवाज है? पी लू। तो हम यहां से ल और प तक पहुंचते हैं। ल और प से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? तो अब ये जिम्मेदारी लर्नर्स पर है, बच्चों पर है कि वो ल साउंड और प साउंड से शुरू होने वाले या ऐसे वर्ड्स जिसमें ल और प साउंड होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उसके शब्द वो खुद बताएंगे। और बच्चों का जो अपना वोकैबुलरी है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ल और प आवाज वाले शब्द मौजूद होंगे। जैसे वो ल से बोल सकते हैं लाल, लीला, लपेटना, लकड़ी, लड़की, लाल, लाली, लेना। प से बोल सकते हैं पतंग, पीला, पिता, पालक। ऐसे बहुत सारे शब्द बच्चे बोल सकते हैं और ये वो वर्ड्स होंगे जो उस बच्चों की वोकैबुलरी में ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें उनके अपने दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं। आपके किन दोस्तों के नाम में ल और प है? ठीक है, तो हम बार बार बच्चों को उनकी अपनी लाइफ पर लेके जा रहे हैं, जहां बच्चों को उन साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना है, उन साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है, और फिर हम लेटर्स पर आ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हमने लैंग्वेज को होलिस्टिक तरीके से लिया है। हमने कहीं सेग्रीगेशन नहीं किया है कि पहले हम सिर्फ अक्षर सिखाएंगे ल और प, फिर हम वर्ड सिखाएंगे लप और पल, फिर हम मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे लालू और पीलू, फिर हम वाक्य सिखाएंगे, सेंटेंस सिखाएंगे। हमने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है जो नेचुरल तरीके से हम लिसनिंग स्पीकिंग में करते हैं। हम लिसनिंग स्पीकिंग में एक पूरा कन्वर्सेशन सुनते हैं, पूरा मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्सेशन सुनते हैं, फिर हम उसमें से सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर वर्ड्स के बाद हम लेटर पर आ सकते हैं। तो हम जो प्रोसेस या हमारा ब्रेन जो प्रोसेस या हम अपनी आम जिंदगी में वो जो लैंग्वेज यूसेज का प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही प्रोसेस हमें रीडिंग राइटिंग के लिए भी फॉलो करना होगा। तो हम जब होलिस्टिक तरीके से लैंग्वेज स्किल्स को लेते हैं, तो हम कहीं भी लेटर रिकॉग्निशन को ड्रॉप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बस इसके प्रोसेस में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम यहाँ तक आएंगे कैसे। और ये प्रोसेस बच्चों के लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग है और इसलिए भी रिटेनफुल रहेगा क्योंकि ये सारा काम बच्चे खुद करते हैं। इसमें टीचर अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही है, वो सिर्फ बच्चों से पूछती चल रही है कि अच्छा बताओ लालू में कौन सी आवाज है, पीलू में कौन सी आवाज है, शुरू में कौन सी आवाज है, लास्ट में कौन सी आवाज है, या कौन सी साउंड है। आपके दोस्तों के नाम में किन में ल है, किन में प है। तो ये सारा काम लर्नर ओरिएंटेड है, इसलिए बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इसके बाद हम जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसमें से हमने तीन लेटर्स को आइडेंटिफाई किया है। हम किसी भी स्टोरी में तीन या दो या एक लेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वो लेटर होता है जो बार बार आता है, जो रिपीटेडली उस स्टोरी में बहुत नेचुरल तरीके से आता है। एक और यहाँ जो डेंजरस रिperकशन हो सकती है इसकी, वो ये होती है कि जब हम ये कहते हैं कि हम एक खास अक्षर से सिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर लेटर को सिखाने के लिए हम उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को लेते हुए एक स्टोरी वीव करते हैं, जो बहुत नेचुरल नहीं होती है। जैसे एक दिन की बात है, एक लड़की जा रही थी, लाल रंग का रिबन पहने हुई थी, उसका नाम था लीला। लीला ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, उसकी बिंदी भी लाल थी, उसकी चूड़ी भी लाल थी। तो हमने बार बार लीला, लाल, लाल शब्दों जैसे का इस्तेमाल किया जिसमें ल साउंड बार बार आती है।
ये जो रेपिटेटिवनेस है ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें नेचुरलनेस नहीं है, ये बहुत नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। नटखट घर चल उठ पल ढक कर रख, हम जब इस तरह से लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करते हैं तो ये भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम कभी अपनी आम जिंदगी में ऐसी लैंग्वेज बोलते नहीं हैं कि उठ घर चल अब पट नट खट पट घर, हम इस तरह से कभी बोलते नहीं हैं। हम पूरी पूरी बात कहते हैं कि अब उठ जाइए सुबह हो गई है या स्कूल जाने का समय हो गया है। हम कहीं भी हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते बोलते समय कि इसमें कौन से साउंड्स आ रही हैं, कौन से वोवल हैं, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, ये सब हम ब्रेन कभी नहीं सोचता, हम पूरी बात इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें उस तरह की स्टोरीज से भी दूर रहना होगा जो डेलिबरेटली एक खास अक्षर को लेकर हम वीव करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ल साउंड का, कि एक लड़की थी, लाल रिबन था, लाल जूता था, लाल फ्रॉक थी, उसका नाम लीला था। तो ऐसा कभी नहीं होता हम बार बार एक ही तरह की साउंड से इनिशिएट होने वाले, शुरू में आने वाले वर्ड्स की कोई स्टोरी वीव करें। तो हमने जब लालू और पीलू स्टोरी पढ़ी है तो हमने से उसमें स्टोरी में से हमने 3 लेटर्स को आइडेंटिफाई किया है, प ल और म। हमारे पास प से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जिनमें प की आवाज है। ये जो हम शक्ल देखते हैं, प की तस्वीर देखते हैं, हमें इस प की तस्वीर को इन वर्ड्स में आइडेंटिफाई करना है। तो हम कहेंगे कि इसमें भी प है, पतंग में प है, पोटली में प है, पूना में प है, पेड़ में प है, लेकिन मौसी और मौसी में प नहीं है, पैसा में भी प है। ठीक है, तो हमने प लेटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद प वाले शब्द लिखे और कहा कि बताओ इन वर्ड्स में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें ये प है। ठीक है, तो पतंग, पोटली, पैसा, पूना, पेड़ और मौसी में प नहीं है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम म देखते हैं तो प में और भी बहुत सारे शब्द हैं, पालक है, पुल है, और म के हम जब शब्द देखते हैं तो है मैदान और माला। ठीक, ये हमारे पास इतने सारे शब्द हैं, म वाले भी हैं, ल वाले भी हैं और प वाले भी हैं। तो लाल है, ये जो लाल वर्ड देखते हैं इसे हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ल के साथ। लोटा को भी हम ल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लीला को भी हम ल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मेला को हम म के साथ भी रख सकते हैं और ल के साथ भी रख सकते हैं। मोती को हम म के साथ जोड़ेंगे, मौसी को हम म के साथ जोड़ेंगे, मदन को हम म के साथ जोड़ेंगे, मकान को हम म के साथ जोड़ेंगे, लेटना को ल के साथ जोड़ेंगे। तो हम अपनी स्क्रीन पर ये जितने भी वर्ड्स देखते हैं और जो लेटर्स देख रहे हैं, बेसिकली हमें वर्ड्स में उन लेटर्स को खोजना है। यहाँ जो सबसे बड़ा स्किल काम आता है वो स्किल हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन जितनी ब्रॉड होगी, हम लेटर्स और वर्ड्स को उतने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अदरवाइज म को ग बनने में समय नहीं लगता, या न को भी म बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो ऑब्जर्वेशन है और लेटर साउंड एसोसिएशन है हमारे इस एक्टिविटी में। और एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लालू और पीलू की स्टोरी से। फिर हमने ये दिया उसको म प ल। तो हम ये कह सकते हैं कि म प ल से बनने वाले शब्द और कौन कौन से हैं। बच्चे जब शब्द बोलते चले जाएंगे तो इस तरह से हम उन्हें बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे। मेल, पालना, मील, माप, पुल, और जो शब्द बच्चे बताएं वो हम लिखते जाएंगे और उन कैटेगरीज में लिख देंगे। जैसे म का कैटेगरी है तो मेल यहाँ चला जाएगा, पालना प में चला जाएगा, और यहाँ ल से शुरू होने वाला हमारे पास कोई शब्द नहीं है लेकिन यहाँ पर है मील, तो ये म में भी जा सकता है और ल में भी जा सकता है। तो ये मेरी बातचीत यहाँ पर खत्म होती है, जहां पर हमने ये जाना कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर।
चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेज हो, कोरकू हो, अभी कुरान बंसे ने हो, या अभी घर नहीं जाएगा, या फिर वो अपनी एक फुल फ्लेज लैंग्वेज हो जिसमें हम लिटरेचर लिखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो हम लैंग्वेज के कल्चर को भी एक्वायर करते हैं। यानी जिस सोसाइटी में, जिस स्पीच कम्युनिटी में उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, उस स्पीच कम्युनिटी की जो उसका जो कल्चर है, हम उसे भी एक्वायर करते हैं। वर्ड्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। वर्ड्स हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही मीनिंग देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देते हैं। और मीनिंग जो है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिक्शनरी डिसाइड नहीं करती है। वो मीनिंग डिसाइड करता है कॉन्टेक्स्ट की, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या है। और दूसरा वो डिसाइड करती है कम्युनिटी। तो एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है हल्का। जब हम ये हल्का वर्ड हिंदी में सुनते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया में ये ऑब्जेक्शनेबल वर्ड नहीं है। ठीक है, आप बहुत हल्के हैं, कहीं भी चले जाएंगे, आप बहुत हल्की फुल्की हैं, तुरंत पहुंच जाएंगी, जल्दी जल्दी चलेंगी। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्का शब्द व्यक्तियों के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसकी नेगेटिव कोनोटेशन है। यानी कि ये एक अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ, जिस पर्सन के साथ हम हल्का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है कैरेक्टरलेस होना। तो इसलिए वर्ड्स और डिक्शनरी में आपको हल्का का मतलब मिलेगा लाइट वेटेड। लेकिन ये जो हल्का वर्ड है, आप इसे पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी कोनोटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए लैंग्वेज वन में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी लैंग्वेज हमारी है या मदर टंग है, L1 है, वो हम एक्वायर करते हैं, उसे हम लर्न नहीं करते। लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग तब होती है जब हम उसे एफर्ट्स के साथ सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम झारखंड में है और या फिर महाराष्ट्र में और कोरकू भाषी हैं, कोरकू स्पीकर हैं, तो हमें मराठी को लर्न करना होगा, क्योंकि मराठी हमारे एनवायरमेंट में नहीं है। और सोशल मीडिया या सिनेमा की वजह से हिंदी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, और हिंदी के गाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग उतना हिंदी कन्वर्सेशन में नहीं समझ पाते हैं, बोलते नहीं, लेकिन वो हिंदी के जो सॉन्ग है वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज कहाँ इस्तेमाल होती है, किस किस तरह से इस्तेमाल होती है, ये इस बात का हमारे लैंग्वेज लर्निंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू दोनों के जो फंडामेंटल हैं लर्निंग के, वो एक जैसे हैं। और एक ही फंडामेंटल है कि जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, वो लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, और बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो। और अवेलेबिलिटी के साथ साथ उस लैंग्वेज को यूज करने की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हो। अदरवाइज हम कोई भी व्याकरण या ग्रामर की बुक से कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। वो सिर्फ उतनी रहेगी जितना आप लिख सकते हैं, लेकिन कन्वर्स करने के लिए आपको लैंग्वेज को यूज करना आना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अगर नदी में तैरना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो स्विमिंग की कोई बुक पढ़कर हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। स्विमिंग हम तब सीख पाएंगे जब हम खुद पानी में उतरेंगे और स्विमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि लैंग्वेज जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो मेरी बात फिलहाल यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद अगर प्रोफेसर संध्या साहू चाहें तो आगे वो कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मैंने उसको उषा जी, आगे। आई थिंक बेहतर होगा, क्योंकि कुछ सवाल हो सकते हैं इस स्टेज पे जो फर्स्ट लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं, आप हैंड रेज करेंगे तो हम एनआईसी से रिक्वेस्ट करके अनम्यूट करवा सकते हैं, या आप चैट पे सवाल लिख दीजिए। चैट पे भी तो बहुत सारे सवाल हैं वीरता मैम। एक तो यही सवाल आया है कि अच्छा, उदाहरणों से समझा दिया है। मुझे मालूम नहीं कि 618820 कौन है। इन्होंने कहा है कि धन्यवाद मैडम, उदाहरणों के साथ आपने बहुत सुंदरता से समझाया है। कृपया स्पष्ट कीजिए मात्रा संयुक्त शब्द कैसे सिखाएं। ये ठीक वैसे ही जैसे हमने हाथी सीखा, जैसे हमने गन्ना सीखा है। तो गन्ना और हाथी जब ये बार बार आते हैं, बार बार हमारी नजर से गुजरते हैं, तो हाथी और गन्ना ऐसे शब्दों की जो इमेज है
वो पिक्चर के फॉर्म में हमारी विजुअल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो गन्ना शब्द हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, गन्ना शब्द हम बहुत आराम से बोलते हैं, जितना, क्योंकि ये वर्ड हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, गन्ना हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम गन्ना को बार बार बोलते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर आना है कि इसको लिखा कैसे जाए। सुनने और बोलने, लिसनिंग स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है कि इसको लिखना कैसे, या इसको ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना कैसे है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जितना ज्यादा हम प्रिंट की बात करते हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो उसमें गन्ना और हाथी जैसे शब्द लिखे हुए होंगे तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा बताओ गन्ना, तो हमें ये साउंड्स को बोल के बताना होगा, गना, गन्ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, गन्ना। तो इसमें एक और साउंड है न की, ये ऐसे लिखा जाता है। तो जो हम बोल रहे हैं और जो वर्ड वो लिखा हुआ है, उसके बीच में एसोसिएशन डेवलप करना जरूरी है। इसलिए जब हम रीडिंग राइटिंग की बात करते हैं तो जितना ज्यादा हमारा काम विजुअल ओरिएंटेड होगा, ठीक है, हम ऐसे सीधा एक्सप्लेन ना करें बल्कि वर्ड्स को लिखा हुआ दिखाएं और साउंड्स को उसके साथ एसोसिएट करें। तो गना और गन्ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम बोलते हैं पाना और पन्ना। तो पाना और पन्ना में सिर्फ न की साउंड अलग है, और इस तरह से हम जो संयुक्त शब्द हैं उन्हें भी हम सिखा सकते हैं। मात्रा का हमने इस्तेमाल बता दिया है। अगर हम बोलते हैं गधा और फिर हम बोलते हैं कि इसमें किसकी आवाज है, धा। अब ये एक और इसमें डंडा लगा हुआ है, ये है आ की, और ये है आ। तो हमें आ जो ओरिजिनल वोवल है उससे हमें आ की मात्रा तक पहुंचना होगा। जैसे हम बोलते हैं आम, हम बोलते हैं आना, हम बोलते हैं आदमी, ठीक है, या आला, आरी। अब हम इसमें कहते हैं कि एक हम आ की मात्रा होती है, अगर ये जिसके साथ लगती है तो उसकी भी आवाज वैसी ही हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं माँ ला, ठीक है। तो हम अगर माँ और ला ये दोनों को आ की मात्रा के बिना लिखते हैं तो बनता है मल, और हम इसको आ की मात्रा के साथ लिखते हैं तो बनता है माला। तो मिनिमल वर्ड पेयर है लिंग्विस्टिकली। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि जो व्यंजन है, जो स्वर है, नहीं व्यंजन है, वो एक जैसे रहते हैं, सिर्फ उसमें स्वर बदलता है, वोवल्स बदलते हैं। जैसे मल और माल, ठीक है, तो मल, म ल और माल, उसमें भी म और ल है, सिर्फ म में आ की आवाज है तो हम बोलते हैं माल, ठीक है। तो मल, माल, जल, जाल, कल, काल, यहां से हम आ की मात्रा सिखा सकते हैं। और ऐसे ही मिनिमल वर्ड पेयर्स हमारे पास अलग अलग मात्राओं के लिए भी हैं, जैसे मिल, मील। तो मिल में हरस्व ई का इस्तेमाल करते हैं और मील में दीर्घ ई का इस्तेमाल होता है। मिल, मील। दिन, दीन। ऊ की मात्रा के लिए सुख, सूख, सुखा, सूखा। और ओ की मात्रा के लिए और बोल, बॉल, खेल, होल, हॉल, लोट, लॉट। तो ये जो पेयर्स हैं, हमारे वोवल्स के जो पेयर हैं, जो स्वरों के युग्म हैं, आ, ई, उ, ओ, इनको हम एक साथ रहते हैं। तो ये मिनिमल वर्ड पेयर के जरिए हम जो मात्राएं हैं उन्हें हम सिखा सकते हैं। हमें बेसिकली ये नहीं करना है कि ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब हम इनके साथ छोटा बड़ा लगा देते हैं तो फिर हम साउंड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमें बेसिकली साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना और साउंड्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो हमारे कान या हमारा जो सुनना है वो जितना सेंसिटिव होगा, हम साउंड्स में उतना ज्यादा डिफरेंस कर सकेंगे। तो लेकिन जो हम साउंड्स को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो वो लिखा हुआ भी होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं हम लिखते हैं खिल और खील लिखते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो खिल और खील, खिल में जो कम आवाज है वो लिखी हुई नजर आनी चाहिए, और हम दूसरा शब्द लिख देते हैं खील। तो यहाँ जो दोनों में ई का मात्रा का इस्तेमाल होता है, एक है ई और एक है ई। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि जब इसमें ये मात्रा लग रही है तो इसकी आवाज छोटी है, जैसे खिल, जैसे मिल, जैसे पिला।
अब इसकी बड़ी आवाज है, ये छोटी आवाज आगे से लग रही है, बड़ी आवाज पीछे से लग रही है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके, या जो बच्चों की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर, या बच्चों का जो कॉन्टेक्स्ट है उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर हम ऐसे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम मात्रा भी सिखा देंगे और उसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन भी हम सिखा सकते हैं। लेकिन इसका एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा लिखा हुआ लैंग्वेज वो देखते हैं उतना ज्यादा उनकी रीडिंग राइटिंग बेटर होती है, क्योंकि सुनने बोलने में उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे पूरे सेंटेंस, पूरी कहानी बोलते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था, ठीक है, कि एक हाथी तालाब में नहा रहा था, फिर खरगोश आया, उसने कहा ए मोटे बाहर निकल। तो ये पूरी पूरी कहानी बच्चे कहते हैं, बोलते हैं। वो कहीं ब्रेन कहीं डिफरेंशिएट नहीं करता है कि अभी तो मैंने मात्रा सीखी नहीं, अभी मैंने अक्षर सीखे नहीं, तो मैं कहानी कैसे कह सकता हूँ। तो बच्चों के पास जो ओरल लैंग्वेज का एसेट है उसे हमें रीडिंग राइटिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से आप जो मात्राएं हैं और संयुक्त शब्द हैं वो सिखा सकते हैं। थैंक यू उषा जी। मतलब आप देखेंगे अभी नंबर हमारे कंटिन्यूसली पार्टिसिपेंट्स के बढ़ते रहते हैं, और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स 3 बजे के बाद जो है अपनी ड्यूटी से फ्री होते हैं, तो अभी 263 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो शुरू से नहीं जुड़ पाए, यूट्यूब लिंक जो हमारा है वो जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, उसी पे आपको आज का जो सेशन आप अभी तक नहीं भी देख पाए आप उसे देख सकते हैं, वो पहले से ही सर्कुलेटेड है। अब 2 सवाल अगर हम ले सकते हैं यहाँ पे, एनआईसी एक तृप्ति मोहर हैं, वो एक सवाल पूछना चाहती हैं, और दूसरा ब्रिज ब्रिज मोहन। चैट पे है, हाँ जी, ब्रिज मोहन जी हैं, इस्तवाल जी, उनका भी अगर आप अनम्यूट ऑप्शन दे दें, अश्विनी जी। NIC, can you unmute Tripti Mohar and Brij Mohan ji? Okay, let me try. उनसे बोलिए वो चैट बॉक्स में सवाल लिख देंगे। ब्रिज मोहन जी अगर सुन रहे हैं तो हाँ, वो तृप्ति चैट जी बॉक्स में अनम्यूट सवाल हो लिख गई दें। हैं। तृप्ति मोहर जी, आप सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया और ये वाकई में एक बहुत बेहतर तरीका है। मैं ये जानना चाह रही थी कि लैंग्वेज 2 जिससे बच्चे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं, जो माहौल में इतनी नहीं होती है घुली मिली, जैसे कि हिंदी भाषी बच्चों के लिए अंग्रेजी उतनी फैमिलियर नहीं है, तो वो भी हम इसी तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। मैंने इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के एग्जाम्पल साथ साथ लिए हैं। मिठाई स्टोरी और समथिंग स्वीट स्टोरी वो मैंने एक साथ ही पढ़ी है। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जब बच्चों को सुनने को मिलती है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जरिए वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं। जैसे द डंकी रिफ्यूज, द डंकी डिनाइड, डंकी सेड नो। तो जब इस तरह का पैटर्न, वो ना डी जानते हैं, ना ओ जानते हैं, ना एन जानते हैं, ना के, ना ई वाई, ना वो कुछ नहीं जानते हैं बच्चे, लेकिन उस स्टोरी में बार बार डंकी वर्ड आता है। ठीक है, द डंकी सेड नो, द डंकी रिफ्यूज, द डंकी रिफ्यूज अगेन। ठीक। तो जब इस तरह का रेपिटेशन होता है तो वो डंकी वर्ड को पकड़ लेते हैं और वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी पकड़ते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, अदर लैंग्वेज हो, उसे लर्न करने का एक ही फंडामेंटल है, और वो है लैंग्वेज को बार बार सुनना और उसका इस्तेमाल करना। तो जितनी ज्यादा वो जो अनफेमिलियर लैंग्वेज है, यानी कि जो उनके एनवायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उस लैंग्वेज को वो क्लासरूम में लेकर आए। और ये बहुत अच्छा रहता है कि जो टेक्स्ट हम जो अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, वही टेक्स्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। क्योंकि अपनी लैंग्वेज में जब हम वो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें उसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज में उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो उस लैंग्वेज और टेक्स्ट का जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो जो फेमिलैरिटी है, वो अदर लैंग्वेज को या सेकेंड लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करती है। अगर हम एक ही टेक्स्ट को हमने हिंदी में पढ़ा, फिर उसी टेक्स्ट को जब हम उसी पिक्चर के साथ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो बच्चे तुरंत बता देंगे अपनी मदर टंग में कि यहाँ ये बात लिखी होगी। ठीक है, जैसे जी एक मैम, इस तरीके से तो बता दिया जाएगा बच्चों को, हाँ लेकिन अगर अलग अलग टीचर पढ़ाती हैं
हाँ हिंदी और इंग्लिश, तो क्या उनको मीनिंग बताना पड़ेगा? ना, मीनिंग हम उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन बाइलिंगुअल बुक्स भी आती हैं, या ऐसी बहुत सारी, जैसे हमारी बरखा सीरीज है। बरखा सीरीज अलग से हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, संस्कृत में भी है और इंग्लिश में भी है। तो बेसिकली बच्चा तो एक है, इसलिए लैंग्वेज टीचर या सभी सब्जेक्ट के टीचर्स को मिलकर ये प्लानिंग करनी होगी कि हम जो टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम इंग्लिश भी कैसे सिखा दें, उसका हम इस्तेमाल हिंदी के लिए भी कैसे कर दें, और गणित के लिए भी कर लें, और ईवीएस के लिए भी कर सकते हैं। तो सेम जी टेक्स्ट आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बेहतर हो सकता है, वो यूजफुल हो सकता है, बस हमें स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी। तो इसलिए ये जो सेग्रीगेशन है सब्जेक्ट्स का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी हार्ड सेपरेशन के अगेंस्ट है, कि सब्जेक्ट्स में हम इस तरह से डिवीजन नहीं कर सकते। और ये दो दो अगर टीचर्स अलग अलग हैं, तो ये दोनों टीचर्स को मिलकर प्लानिंग करनी होगी कि हम इसी एक टेक्स्ट का इस्तेमाल इंग्लिश के लिए कैसे कर सकते हैं। हिंदी में हमारे पास बरखा बहुत समय से अवेलेबल है, लेकिन अंग्रेजी में बरखा अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आज का सेशन लेना है तो अंग्रेजी भी मुझे खोजनी पड़ी कि अंग्रेजी कहाँ है। तो इसलिए हम दोनों टेक्स्ट को हम साथ साथ इस्तेमाल कर पाए हैं। और यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेजी सुने, बोलें, और शब्दों में और जेस्चर्स में उसका इस्तेमाल करें। तो जेस्चर से भी बच्चे वर्ड को एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे कम इन, कम इन, कम इन, प्लीज जी सिट, जी जी, प्लीज सिट। बिल्कुल। तो ये जो जेस्चर्स हैं ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे समझ जाते हैं कि इसका ये मतलब है। लेकिन जो लैंग्वेज बच्चों के एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, उसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत आती है। बच्चा बहुत शार्प है, अपनी लैंग्वेज में उससे जो पूछे वो बता देगा, लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी लैंग्वेज पे पहुंचते हैं तो बच्चे स्ट्रगल में आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट से और दूसरा लैंग्वेज से, कि एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छा ये किस बात की बात कही जा रही है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि फम्मो, तो बहुत सारे जो इस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है वो इसका मतलब नहीं जान पाएंगे, यानी कि उसकी कोई इमेज हमारे ब्रेन में नहीं आती है फम्मो। हम्म, लेकिन जैसे हम कहते हैं बैठिए, या उड़िया में कहते हैं बसो बसो, ठीक है, तो वो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसका मतलब है बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज हैव अ सीट। हम्मो बेसिकली मणिपुरी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है बैठिए। और अगर मान लीजिए कि हम मणिपुर के हैं और हम सुनते हैं बैठिए बैठिए, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी जी लैंग्वेज किसी भी हिसाब से आप सिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भाषा लिखी हुई हो, सुनने में आए, उसको बोलने के मौके दिए जाएं। और इनिशियली बच्चे अपनी लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को मिक्स करके बोलते हैं, तो इसकी आजादी भी, फ्रीडम बच्चों के पास होनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद मैम। मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी कि जैसे जो इमेज है, जैसे आपने कहा बैठो, तो हिंदी भाषी जी बच्चों को समझ में आ गया बैठो का मतलब बैठना है, लेकिन वही हम उनसे कहेंगे सिट, तो वो हाँ क्या उसका मतलब बताना पड़ेगा उन्हें एक बार की मीनिंग क्या है, या फिर वो हाँ, जेस्चर से ही हर जेस्चर चीज से भी जेस्चर वो से? समझ सकते हैं, जेस्चर से भी समझ सकते हैं, और वो आप उन्हें समझा भी सकते हैं। अगर कि बैठिए, तो हमें प्रॉम्प्ट करना होता है, जो बात हम बच्चों की मदर टंग में कह रहे हैं उसी बात को हमें अदर टंग में भी कहना होगा। तो बच्चे धीरे धीरे उससे फेमिलियर होते चले जाते हैं कि अच्छा हाँ, उसको बैठिए का मतलब कोरिलेट कर होता है लेंगे। sit। जी जी जी, हाँ, ठीक ठीक। लेकिन ये बहुत मैकेनिकल ना हो, कि हम अब राइमिंग वर्ड्स पर आ गए हैं कि पिट है, मिट है, मिर्न है, पिन है, वो उसका हम्म, कोई मीनिंग नहीं है। हम देखिए, हम एक स्टोरी से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अल्टीमेटली इंग्लिश की स्टोरी ही अंग्रेजी लैंग्वेज तक लेके जाएगी। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वो सिर्फ मदर टंग के लिए नहीं होता है, वो किसी भी हम्म। लैंग्वेज के लिए होता है। तो बस वो एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है। एक सवाल चैट पे था कि क्या डज इट मीन दैट शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर लोकल स्टोरीज इन L2? L2 की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 सेकेंड लैंग्वेज की नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज की चर्चा कर रहे हैं। तो आई बिलीव यू वांट टू आस्क दैट इन चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज वी शुड टेल मोर स्टोरीज, और इन लैंग्वेज 2। सो उषा जी, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, आप L1 की बात करें और L2 की बात करें, तो जो लोकल स्टोरीज है उससे आप L2 में सुनाइए। उसका मतलब फायदा ये रहता है कि जो लोकल स्टोरीज का जो कॉन्टेक्स्ट है, बच्चे उस कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियर हैं।
तो कोई एक स्टोरी जो उस पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी में है, जो उस कल्चर का हिस्सा है, उसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस में सुना रहे हैं। तो आप ज्यादा ऐसा लोकल स्टोरीज को L2 में सिखाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट उनके पास अवेलेबल है, तो एक उनके पास लैंग्वेज और आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में डेजर्ट है और कैमल है, यानी कि दो चीजें हमारे पास ज्यादा है, रेगिस्तान भी है और ऊंट है। तो ऊंट से जुड़ी हुई कहानियां जो लोकल स्टोरीज हैं उसको जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाते हैं तो बच्चे के पास डेजर्ट का और कैमल का दोनों का कॉन्टेक्स्ट है, उसे क्या समझना है, लैंग्वेज। तो वो किसी अदर लैंग्वेज में L2 में उस फॉर्मुलर कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोकल स्टोरी जितनी भी L2 में सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि स्टोरी बच्चे के लेवल की हो, इंटरेस्ट की हो और उनकी लोकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई हो। तो ऐसी स्टोरी जिसके कैरेक्टर्स बच्चे जानते हो, बहुत एलियन ना हो। थैंक यू उषा जी। ब्रिजमोहन जी भी अपना आप सवाल पूछ सकते हैं। ब्रिजमोहन जी अनम्यूट हैं। नहीं। ये निपुण भारत की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो मैं अभी तुरंत शेयर कर लूंगी सेशन के बाद, कि मेरा अपना अभी वर्कशॉप चल रही है तो मैं इवनिंग तक ये शेयर कर लूंगी। जो हमने हिंदी में लिखे हैं एलोज, गाइडलाइंस पूरी नहीं लेकिन एलोज हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं, वो मैं शेयर कर लूंगी। थैंक यू। ब्रिजमोहन इस्तेवाल जी, क्या आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं? शायद वो अभी उपलब्ध वैशाली नहीं है। जी का एक मतलब कमेंट है कि उनके पास इनफ एफएलएन टूल नहीं है जो सभी लर्निंग आउटकम्स के लिए हो। वैशाली जी, हमारे पास जो निष्ठा ये दीक्षा एफएलएन है पोर्टल है, उस पे क्लास 2 और क्लास 3 के वीडियो प्रोग्राम्स हैं जो इन एलओ पे बेस्ड हैं। और इसके साथ साथ इसे डीमिस्टिफाई करने के लिए हमने इन्फोग्राफिक पोस्टर्स भी बनाए हैं, वो भी दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल हैं। हमने कोशिश की है कि हम छोटे छोटे वीडियो प्रोग्राम्स के थ्रू लर्निंग आउटकम्स को एकदम क्लियर करते चले जाएं जहां वो आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू। बस और आप अभी ज्वाइन कर मैं लीजिए। उषा जी के बिहाफ पे ये भी कह दूं कि बहुत सारे जो उषा जी ने अभी जिस तरह से पेडागोजी की बात करी, हाउ द पेडागोजी वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज वन, lot of monographs are also under preparation with Usha ji, that will be also available soon, so that all the states are not only going to listen to that but read that at their own pace and understand it thoroughly, circulate it widely, so that more and more teachers get benefited and learn the pedagogy तो as जब विनीता envisioned मैम by ने NEP. ये डिस्क्लोज कर ही दिया है मोनोग्राफ का, तो मैं भी डिस्क्लोज कर देती हूँ कि उनमें से एक राइटर विनीता मैम भी है। हमने Thank यही you. कोशिश की है कि हमारे देश के अंतिम टीचर तक के लिए हम बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल करा सकें, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और लेकिन चाहेंगे कि फिर स्टेट्स अपने रीजनल लैंग्वेजेस में उसे अडॉप्ट करें, अडेप्ट करें। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उड़िया, इन सब का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हिंदी जैसा नहीं। तो एग्जाम्पल्स हम अगर हमारी लैंग्वेजेस के आते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे हिंदी, तमिल में क है, ग है और उसके बीच के लेटर्स नहीं है। और तमिल में ये है, च है, य है, बीच के लेटर्स नहीं है, जबकि हिंदी में बीच के लेटर्स हैं। और इसी तरह से तमिल में वो शॉर्ट वॉवल भी है, लॉन्ग वॉवल भी है, जबकि हिंदी में ये लॉन्ग वॉवल है। इसी तरह से हिंदी में ये लॉन्ग वॉवल है, लेकिन तमिल में का शॉर्ट वॉवल भी है, लॉन्ग वॉवल भी है। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है लैंग्वेजेस में, इसलिए लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है सुविंदा मैम। हाँ जी, मेरी तरफ से ब्रिजमोहन भी जी बहुत आई थिंक अनम्यूट है। Yes, वो ma'am. सवाल Yes, पूछ सकते ma'am. हैं। Yeah. Thank you. So, सबसे पहले मैं उषा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से सहज
साथ में और एक अच्छी हिंदी का उपयोग करते हुए जो पूरा उसको है, मुझे लगा बहुत प्रशंसनीय है मैडम का। क्योंकि मुझे ये जब मैम बता रही थी उषा जी, तो तब यानी कि झुनझुन जब हमने बनाई थी राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, जी जी समग्र शिक्षा से जी वर्किंग यूनिट में जैसे consultant, जैसे कि निपुण प्रोग्राम में काफी सहयोग करता रहता हूँ। तो झुनझुन जब हमने बनाई थी तो मेरे यहाँ की टीम की एक बेस्ड अप्रोच को लेकर हम बहुत झगड़ा किया था, तो ये इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके अंत में आकर हम लोग करेंगे। तो मैम आप अभी जो मेरा एक सवाल था, आपने बीच में स्टेटमेंट दिया था तो उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने कहा था कि हिंदी आप कह रहे थे दोनों के नेचर ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंस है। सो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नेचर ऑफ लैंग्वेज में तो मुझे लगता है कि कोई भी भाषा हो उसकी नेचर है उसको अंतर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि लिपि को जब हम सीखने की बात करते हैं वहां पर अगर हो सकता है एक तरह का भिन्नताएं निकल के आ जाए, बट नेचर ऑफ लैंग्वेज में डिफरेंस किस तरह से जी मैं थोड़ा समझ नहीं पा जब हम नेचर ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो बेसिकली उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। तो हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, जैसे हमने तमिल की बात की है तो तमिल में क है और ग है, उसमें ख ग घ ये तीन साउंड्स नहीं है। तमिल में एस्पिरेटेड साउंड्स नहीं है, और जबकि हिंदी में एस्पिरेटेड और नॉन एस्पिरेटेड दोनों साउंड्स हैं। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण जैसे कहते हैं, तो अल्प प्राण है नॉन एस्पिरेटेड साउंड्स और महाप्राण है एस्पिरेटेड साउंड्स। सॉरी। तो हिंदी में क भी है, ख भी है, ग भी है, घ भी है। हिंदी में च भी है, छ है, ज है, झ है, यानी कि एक नॉन एस्पिरेटेड साउंड है अल्प प्राण है और उसी का दूसरा महाप्राण यानी कि एस्पिरेटेड साउंड्स भी हैं। तमिल में एस्पिरेटेड साउंड्स नहीं है, ठीक है, तो उसमें क है, ग है, पंचम नेजल साउंड है, च है, य है, यानी कि नेजल साउंड है उसकी। अब अगर एक तमिल भाषी बच्चा जब हिंदी पढ़ता है तो वो ये छींटे को बोलेगा चींटे, क्योंकि छ एस्पिरेटेड साउंड तमिल में नहीं है। और जो जो साउंड्स हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होती हैं, हमारे स्पीच ऑर्गन्स उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते बशर्ते वो लैंग्वेज हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हो। तो इसलिए नॉन एस्पिरेटेड एस्पिरेटेड साउंड अल्पप्राण महाप्राण में ये डिफरेंस है। इसी तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है। रामगा उइटे हेनवे और रामगा बैटे हेनवे, तो ये जो ये जो कोरकू भाषा है, रामगा बैटे हेनवे रामगा उइटे हेनवे, तो राम का भाई आया है और राम की बहन आई है। हम हिंदी में का और की का इस्तेमाल करते हैं, आया और आई का इस्तेमाल करते हैं जेंडर के हिसाब से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से। लेकिन कोरकू में डिफरेंस नहीं है। रामगा रामगी, रामगा उई रामगा बई, रामगा उई यानी कि राम का भाई और रामगा बई यानी कि राम की बहन। आला आए तो रामगा उई टे हेनवे दोनों में है। तो इस तरह से लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बांग्ला की। बांग्ला में एक साउंड है य, ठीक है, य हिंदी में भी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये बांग्ला शब्द में ये साउंड शुरू में आती है योग्य, तो बांग्ला भाषी से योग्य बोलेगा, ठीक है, जबकि यही साउंड योग्य में लास्ट पोजीशन पे आती है तो उसे वो य की तरह प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बोलेंगे योग्य, योग्य, ठीक है। तो जब य साउंड इनिशियल प्लेस पर आती है तो उसे वो ज प्रोनाउंस करते हैं, और जब यही य साउंड लास्ट पोजीशन पे आती है उसे वो य प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से लैंग्वेजेस में डिफरेंस है। थैंक यू उषा जी, बहुत ही खूबसूरती से और मल्टीलिंगुअल उदाहरण देते हुए आपने आज का सत्र और पिछला सत्र भी कंडक्ट किया है। एंड आपके साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, पहले भी रहती है। पर्सनली आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू एंड आई थैंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड वेरी वेरी एनरिचिंग सेशन। आशा है इस तरह के सेशन हम आपके साथ और कंडक्ट कराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Now I request and welcome our next speaker on language 2, second language, Professor Sandhya Sahu. She is a professor in RI Bhubaneswar and she has been in NCERT from 1984. She has contributed in the curriculum development during all the NCFs 2000, 2005, and even now after NEP 2020 for language education. She has been part of Nishtha trainings as well, so many of you would probably already be familiar with her. She has been associated with curriculum, syllabus, learning outcome development for all the stages, starting grade 1 to grade 12. She even guides PhD students and conducts researches on teaching English at government primary schools. She is the speaker for Developmental Goal 2, Becoming Effective Communicator L2. That is English, second language, that is English for us. Welcome, ma'am. Now I hand over the session to you. Are you not able to unmute yourself? NIC, can you make her a co-host, please? Whom to make the co-host? Yeah, please make Professor Sandhya Sahu the co-host. She has to Sure. give the presentation. Just give me a moment, please. Yeah. Yes, madam, you're a co-host now. You can present. And I welcome you. Vanita. Thank you. And good afternoon to all present here. And thanks to Usha ji, because she's the one who started it, and then she has already, allowed us to take off so far as second language teaching is concerned, because the ground is already laid, and rightly she has pointed out that whatever, like when a child learns a second language, so first language scaffolds the learning of second language, and we'll start. And I wish many questions from my participants, because this is related to second language teaching, not only the all Indian languages as second language, but also English. So I'd like to start to share my PowerPoint presentation. And the topic that is given to me is Developmental Goal 2 and Teaching of Second Language. So I'd like to just brush the memory of our participants, because for last today is the fourth day. For last 4 days, they are listening to what are there in NIPUN Bharat, and then what are the expectations from NIPUN Bharat, and also how we are going to implement the missions of NIPUN Bharat. So out of these 3 goals, developmental goals, already you all know that developmental goal one is for children maintain good health, second is children become effective communicators, and third is children become involved learners and connect with their immediate environment. But all these things will come under teaching of languages and to become effective communicators. If you maintain a good health, if you are healthy, you are ready to learn languages and you participate in every activities. And when you talk about this third goal, that is to become inward learners and to connect with immediate environment, that will also help us to learn a language, whether it is the mother tongue
or your first language or the second language. So this to have connection with immediate environment, to become involved learners, to participate in your learning process and learn language along with all these activities is the requirement, because without that, without participation, without involvement, without connecting to your own environment, and language learning become difficult, because language learning is meaning making and create a kind of situation when you can participate in the discourse and take your language learning further. So then this is to become effective communicators. We just I'm brushing the whatever has been told to us, that from children's earliest experiences we go ahead with the language learning activities. So when we learn languages, we must accept, or we must give importance to the child, to the earliest experiences of the children, because children come to classroom with many experiences, language experiences, and they come with variety of stories and variety of situations where they express themselves, maybe in a mixed language. They express themselves, and from their mixed language they come to their to using their mother tongue, and then for learning of first and second language. So I am talking about the mother tongue and first language, because sometimes the mother tongue is different from the first language, which is the language of the state. The language of the state becomes the first language. So, but since it is it is smooth, there should be a smooth transition from the from the mother tongue to the first language and to second language learning. And here children also interact with variety of stories, variety of print media. They also they are exposed to the language through many realias, through there's the chocolate wrappers, biscuit wrappers, then there is hoardings and all that. So language, is there in the environment when they start learning learning their first language, or we call it the mother tongue. Okay, so and then they also, like as rightly pointed out by Madam Usha Madam, this is this early language exposure in like oral language exposure will help them to develop their reading and writing skills, and through the language also they develop their own meaning, and they also try to design words, also try to develop different types of words with combination and permutation of different late sounds and all that. There are, because if you look at the children when they start learning language, they they pronounce the words in a very different manner, but they say when they say, they mean. So for example, in Odia we call chawal as bhata, bha and ta, bhata. But when the child learns the language, initially, he says tatta, not bhata. But with continuous exposure to the word bhata, gradually the child speaks bhata. Bhata, tato, tai means bhata khaibi. But when the mother and the siblings and the elders in the family, they talk to them in the like use the right pronunciation and the right sound for bhata, gradually the autocorrection happens in the child, and the child corrects it himself and speaks that bhata tato tai or bhata khaibi. So this for development of this conceptual understanding, and for foundation of the language, this repeated, continuous exposure to the language is a must. So for learning a language, exposure to the language, exposure to the language through stories,
through different situations, through different activities is a must. So then only the children will participate in everyday communications. They can also express themselves. They start expressing themselves in speech, and we call it self-expression in speech. So when when I looked at NIPUN Bharat document, and I found that the children, they should become effective communicators. But how to achieve this goal? So let's understand how children learn language. And since language learning, any language learning, first language, second language, or mother tongue or tongues, the principle of language learning is always same. So if you look at this the language learning process, as madam has already pointed out, that there is a process that is in the brain. We call it language acquisition device, LAD. So this language acquisition device, it helps the children to pick up language. Languages are picked up. We cannot teach children language. Only we can give them create language environment so that children will be able to pick up language. And how will they pick up language? How will they? They will be exposed to many languages. It is only by involving them or by creating a language environment. Let the children be immersed in the language environment. So if they are immersed in the language environment, then they'll be able to pick up language, because language acquisition process is a natural process. They try to pick up language naturally. So if it is naturally, then obviously when the language is there in the environment, they try to they try to pick up languages. And then from this language acquisition and pedagogy of language learning that we talked about, that madam talked about, the basic principle of language teaching and language learning is that it is not a it is there is no linear progression of language skills. We cannot say that languages are learned one after another. This is language is given to them as a whole. And from for example, I can't say the words in isolation. For example, parrot. For example, Jessica madam has said hathi, gadha. We can't use the words hathi, gadha in isolation. It has to be in context. So if it is not in context, then children will not be able to learn the language. So language acquisition is it can happen if the language is given to them in context, and it should be relevant to them, and it should be there in the, and whatever the objects we are talking to, we are referring to, it has to be in the environment. So exposure to the language is through input rich environment, through print rich environment, and then we can lead them to emergent literacy skills, or emergent literacy skills can be developed. They can be emergent readers, they can be emergent writers also. So whenever the activities or any kind of exposure that we are giving to the children, it has to be meaningful, because I have already told you that language learning is meaning making. So first meaning comes, then the grammar and the structure, whatever we talk about. This is the sophistications of language that comes later, because, but the meaning making comes first. So when we talk about meaning making, how can we start using, help the children learn the language? So let's look at this example. So here I have taken two examples. One is that Mithai Wala, who is selling the different kinds of sweets. The other one is a Mela situation. It is a festive situation. Now the festivities around. We had puja just now, and now there will be Diwali celebration. So now, if children are exposed to these kind of
the situations, and can be asked questions on this. What do you see here? What is this man doing? What are the different sweets that are being sold here? So have you seen this kind of, have you gone to a mela? What are the like games that are being played? Did you have, so there are, teachers can ask many questions on that, and they can ask the questions on these pictures itself, on this, like any photograph they can take, any any paper cutting also they can take, or any, if there is a multimedia, they can use multimedia and ask children the questions like what have you seen? So small children with their own language, maybe it is a mixed language, they can say that they have gone to the mela with their parents, with their grandparents, and they can talk about different colors, they can talk about different mithais, they can talk about different games, they can talk about different activities that they do. So in the process, you are making the children familiar with different languages, different words, different situations, and there are many, occasions where they can use language differently, in the sense that suppose there is a mela, they will speak about mela and they will say we enjoyed a lot. But suppose it is or they can say that I went with my parents and with my siblings and all that, and they can also talk about different experiences, and but suppose they have gone to somebody's birthday party, the language will be different. They will say many happy returns of the day. Suppose they go to somebody, visit somebody in the uh, hospital. So there they can say that now get well soon, or ठीक से जल्दी ठीक हो जाओ. So there are many different sentences we use in different contexts. So when language is used in context, children will be able to learn contextual meaning, and also they will be trained to use these sentences in different contexts. So this is that is why exposure to variety of children's this situation is essential for children to pick up language and use language. And then next thing I would like to say that, as already towards the end, Professor Usha Sharma talked about culture. So language always carries culture. Like our country is a multilingual country. We talk about multilingualism. In the first session, Usaji and Meenakshi ji, they talked about multilingualism. Why we talk about multilingualism in early years? It is because children come to school with many languages, and these many languages bring many cultures to the classroom. So when children are talking in many language, in their own languages, they also reflect many cultures. So children, we should include children's cultural and textual knowledge, contextual knowledge in teaching learning process. And then when we ask them to, suppose we have told them a story. For example, madam talked about mithai, the data story, I think that about mithai and all that. Then Lali and Lalu and Pilu. So she talked about. So there are many stories. For example, there are stories in Panchatantra, there are stories in our own Odia culture, there are stories in Sikhi, in Northeastern, there are many stories. So when we are bringing the stories into the classroom, with the stories we bring culture. And when we are interacting with these children, reading out this story to them, when we ask them questions, they also come out with answers and giving us or enriching us what they say, or when they what they say this particular incident or particular animal in different languages. For example, we had a good discussion with Professor Agnihotri, and he said that even the word dog has 10, 15, 20 names. For example, kutta hai, and we call it kukura, and in some language it is called nai. So like many languages they come, and here we are also sensitizing the children to different cultures, different languages, and in the same way we are also helping them to become good human beings, to understand each other, to
to become good human beings. That is also one of the most important aspect of or mission of NIPUN Bharat or an NEP 2020, to make our children good human beings, understand each other, help each other, and also have a peaceful coexistence amongst each other. So now, after this, I'd like to come to this another, so now, already, what, how do you nurture, how can you nurture the fundamental literacy in schools? So in schools with the early learners, I call early learners because they are from age 3 to age 3, 4, 5, 6, 7, 8. So till class 3, we are taking these 6 years together. So from early learners to class 2 and 3. So how, there is a movement. There is a kind of and progression. So from the discussion that we had just now on these two pictures, we can say that children, they have good, at least they have good control over one language. They talk about this picture in their own home language. Okay, and if the home language is different from the school language, for example, if it's a tribal child, the tribal child will understand the picture and answer in his own language. But again, from tribal language, it will come to the first language, that is Odia or the state language. So, how do the child start switching over, or going towards or progressing towards the first language? So, we will take the home language as our as a resource, and with the home language, let the children, let this home language will be a scaffolding thing for the children to learn their first language. So even when the child is scribbling in on the walls, on the mud or the paper while expressing himself, that is also, like, we call it as an indication for writing, because the script, from the scribbling, it goes to write the letters. Okay, letters of alphabet and all that. But for that, we must make our children listen to the language well. If the child is listening to the language, listening with comprehension, then reading and writing becomes it becomes easier for us to establish that. So I'll give you the example of this Emily multilingual education schools in Odisha, where the tribal children, are exposed to their mother tongue in the school, and all the exhibits are there in the classroom. Here, how children are they engage themselves with language. This is a tribal setting of our in Keonjhar district, where the Juanga children, they come to learn the language. So their first language is Juanga. Okay, that is their first language, and then the teacher is taking the things from their daily life. For example, he takes a nest of the birds, then the rings, and then we call it kulla. That is all those, whatever they are using in the home and in the surrounding. He brings and asks them questions, make the children understand, and gradually he says, no, this is in Odia, this is called a ring. This is called a kulla. This is called jhadu. So these are the things gradually, and then they also make it a print rich environment I talked about. So this environment is print rich. The print rich. So if you look at here, this is the print is there, and then all the exhibits are at the background, and the numbers are also there. And children gradually, they learn their own language, their home language, Wanga, and also Odia. So I don't say Odia is a second language for them, because Odia, in some tribal areas, Odia is there in the environment,
They can see the hoardings also in Odia. And so, it becomes easier for the teacher to explain to the children, or to take the children from the home language to to L1, or the state language. And then they're also if you look at their tradition, everything is now like they use mask, they start dancing, they use the mask of a tiger, they use the mask of a bear, and they start dancing. There's a community dance and all that. So from the community stories, from the community dance, they bring these things to the classroom and make the children act, make the children play. So maybe it is a role play, maybe it is a theatrical expression, but children, they express themselves. And again, if there is a story on tiger, there is a story on bear, there is a story on on the environment. Those stories are being spoken to them, and they understand it, they appreciate it, and the teacher uses bilingual approach. The teacher uses the traditional their language, and the first language Odia, the state language. In many parts of the country, you will find that these situations are there where the home language is different from the state language, or from the language that is the medium of instruction. And then there is as Susaji has pointed out, there is oracy to literacy, from the oral language to reading and writing. So oral language, they develop the skills, listening and speaking, and then they come to reading and writing. If they have seen the stories in the in print, and repeatedly they look at the stories in print, they also they pick up the sounds, and they pick up words. There is a sound word association. So now, if this is the situation of learning the first language, and then we can also use these basic pedagogical principles in learning a second language. The second language may be English, or second language, for example, for our children, from tribal language to Odia to Hindi or to English. So I told you there is a progression, but language learning principles are same. So if we are looking at this language learning principles, we must understand that how children learn language, and how children pick up language, and how languages are they become the medium of expression, medium of expressing oneself, the idea, the emotions, and the thoughts. Okay, and then if that is so, then there is a difference between language acquisition and language learning. Language acquisition, where the language is there in the environment, and you have an engagement with language. But when we talk about language learning is there is a conscious effort to learn language. So in second language learning, there is a conscious effort to learn the second language. What is that conscious effort? Here, the language is not there in the environment as we find in the first language learning in our mother tongue. Okay. For second language learning, the language has to be provided to the children in the classroom situation. That is a big difference. If you see how the child learns the first language or the mother tongue and the second language, you will find that the kind of exposure the child gets in learning the first language is not there in learning the second language. The kind of encouragement that we give to our children in learning their first language, that is not there in learning the second language. The kind of time that is given to the children to learn their first language or the mother tongue is not there in learning the second language. In learning the first language, I have already told you that input-rich environment is available to them. Pre-rich environment is available to them. Then time is available to them from the very birth to class when they are like a 3-year-old or a 4-year-old
continuously they are being exposed to the language, oral language. Continuously, the parents, the grandparents, they are telling them stories. Maybe it is from their own culture, from from Panchatantra, from all the stories, even the nursery rhymes and all these. जैसे कि आलू का चालू बेटा कहाँ गया था, that is the Hindi one. So children are exposed to the language from the very beginning, from the very birth itself. So they know the language, and that's why they communicate the language well. So they come to the classroom with this language resource. At least one language resource they come to the classroom. And in multilingual situations, children are exposed to many languages. Sometimes it is not only one home language, there are many home languages that has already been told to us in our NEP 2020. For that kind of situation, that kind of time, that kind of encouragement, that kind of association with sound and word and all that is not available in second language learning, because language is not there in the environment. So in the classroom situation, we have to create language environment for the children. So how will we create language environment for the children to learn second language? For second language, to become a proficient user of second language, opportunities have to be given. It is a must. Opportunities have to be given for the children to learn the language. So now our attempt will be to, from language learning, we are taking we will take the children for language acquisition. So how the child acquires language? He acquires language through exposure, acquires language through use of the language, listening to the language continuously. So our attempt as teachers or as teacher educators, it will be to provide language environment to the children so that they will learn the language and gradually they will start acquiring the language. Because language acquisition is our goal. They must acquire language. One is that listening, speaking. They will be proficient in that. They will listen, speak with fluency and appropriacy and accuracy. And maybe accuracy will come later, because we are not talking about grammar so much. But with appropriacy and fluently they will use, and they will also start reading and writing. So all the principles of first language learning are applicable here when we are talking about second language learning. So in this second language learning, we have already, like as Madam has told, and in the previous sessions also it is told that children they should be immersed in the language environment, immersion theory, so that if they're immersed in language environment, they'll be able to pick up language naturally. And for this immersion of to immerse the children in language environment, storytelling becomes the best medium, best tool. It is, if you like, we must tell stories to the children. The number of stories we tell the children, repeated, as Madam has said, that repeatedly we have to tell the stories, so that the structures, the children will acquire it, and without knowing that they are learning a structure, they are learning grammar, so automatically they form the grammatical structure in their mind. They call it mini grammar. They create in their mind mini grammar. When they come to higher classes, that becomes maxi grammar. So mini grammar they create in their mind on their own. Children will never commit mistakes in like gender. For example, I did a study. Children, this like 4-5-year-old children, they speak Hindi so fluently without making any mistake. I'll give you one example where a small child, he is only 3 year 2 months old. I saw the child is communicating with his friends, and he wanted to. He is being brought up in a Gujarati family. In family they speak Gujarati, and like grandparents and parents they speak in English and Hindi.
and in this like he's going to this like the school 3+. So there he is being exposed to English and Hindi and Marathi, and because he is from Mumbai, Marathi and also Gujarati. So many languages he is being exposed to. So he went in this when he went to a mela and he asked, he wanted to introduce his friend that this is my grandmother. So he says ki bada, ye bada, ye bada. Then the child doesn't understand, the friend. He says ki badi. And then badi also the child doesn't understand. He says, ye dadi hai. And then in another step, he said, ye meri dadi hai. So nobody has told him ki you have to say meri dadi when the like it is strilling use karna hai. So nobody has told. So how the child has learned, and then this becomes a the children, they try to autocorrect themselves, and they also try to make whatever they say is meaningful to the listener. So that it was to everybody's surprise, the child says, "Ye meri dadi hai," and that I can show the recording also, but now it is I think time is short. So but you can understand, children, they try to speak the language and they correct themselves. And another thing is that there is a desire also. There is a desire to communicate. If there is a desire to communicate, children try to communicate well and try to rectify themselves and try to speak in creating meaningful sentences and creating meaningful words. So here, this is a second language to him, but even then, the kind of effort that has gone into it like all this, the stage has been set by the mother tongue. So mother tongue is helping him to learn another language. It is scaffolding. Okay. So here the child and sometimes the child also speaks mixed languages. And as a parent, we do not scold the child. We do not, try to say that, चुपचाप बैठो तुम लोग जब तक ये ठीक से नहीं कहोगे, don't speak. So this culture of silence also make the children retire, make the children feel less confident. So let the children speak in second language, because obviously second language is not their language. If I speak English, suppose I'll give the example of English. Children, they do not, and English is not there in the, apart from few words, it is not there in the environment. They do not know, it is like listening exposure is not there. So obviously, if the listening is not there, speaking will not be there. So if you don't listen to a language, you will not be able to speak the language. So these two skills are not there. So how do you develop the second language skills in children? It is by telling them stories. Telling them stories repeatedly. I'll give you another example. Like for example, I went to a mela, to this a book fair. And in the book fair, I saw a 4-year-old child is turning the pages and telling the story of a thirsty crow. And after 5 minutes, she finished that and she started telling the story. Telling, not reading the story. There's little Red Riding Hood. Okay. So when I stood there and I saw this girl, this girl is reading the story and loudly reading the story, turning the pages, and is reading the story exactly what is written there in the book. So then the mother came and asked me, "What are you looking at, and why are you standing here?" So लड़की ने आपको कुछ बोला क्या? I said, no, I am so happy कि she can read English so well. Then she told me, madam, she is not reading it. She is only telling the story, looking at the pictures, because I told the story minimum 10 times to the child and pointing to the print, pointing to the pictures, pointing to the sentences, 1-2 sentences written after every picture. So this girl, she has heard the story 10-15 times. She has remembered it. She knows that this story, if I look at this picture, this is the language, these are the sentences I have to speak. And she told, and after that, after I asked them what happens next, then she says she can tell me, ma'am, this is, mama, this is a thirsty crow, this is a tree,
T is for tree. So this language, sound and picture association is also there when the child is reading the story. So this I'm talking about second language acquisition. So when the child is telling the story, she with all pronunciation, voice modulation also she was telling. So this is a kind of, reinforcement if you can give to the children by asking them to tell the story, or tell and retell the story. So the voice modulation will be there in second language. The child will be able to, if the same situation comes, then she can say, "Mama, I'm feeling thirsty. Mama, I saw a crow today in the morning. So I saw a tree." So gradually, these words she can produce these words when she is in different situations. So and then because the mother has provided opportunities to the children, to the child to listen in the classroom also, we can provide this listening opportunities to the children, so that we are giving opportunities also to the children to have an engagement with the language, second language. And when the child is, when you ask questions, suppose like for example, the story that I showed you, these are actually, this is the classroom thing. So the example, the previous one, the example that I gave you, that Mela example, if you ask them, what this boy is doing, children may say he's selling mithai, may not say sweets. So acha, mithai, okay, selling sweets. So you are, giving them the right example. The child will know that acha, mithai is called sweets. So next time when he says, Mama, this man is selling sweets. I said, do you know what this is called? This is called, what color is this? This is lal color. So this is, Baba, it is lal nahi, this is called red. So gradually the child will be able to know that yes, this is called red, and if it's exposed to this word sweets and red and any vegetable, anything that we can use from the child's surrounding, immediate environment, and create situations for the children to learn. For example, in a vegetable market, we can go and say, "Beta, this is ये तो बैंगन है, पता है इसको brinjal, this is brinjal, this is potato, this is tomato." So you give them, and we create situations. And if we create situations, and in the situations you use language, the child will listen to the language, will know that this is this is associates language with the sounds, and will be able to speak. And once the child starts speaking, then when we give them this print exposure, children, they feel very happy to read, because there are many researches are there. For example, even music can help us to read better. Dance can help us to read better. There was an example. I attended a conference, international conference, where this dance is used to motivate the children to read. Shobha Narayanan, she was performing a Kathak dance using all these visual, all these mudras, like the tiger is coming, the hunter is coming, the elephant is coming. Children looked at these mudras, and how the elephant comes, how the deer dances and comes. They look at these mudras and they say, "Ma'am, this is deer, this is elephant." So they know that Hathi, because they have seen, they saw this, and then when she was asking them कि अभी बताओ कि मैंने कौन सा डांस किया, मैं कौन आया, कौन सा एनिमल आया, जैसे कि ये हाथी आया, ये कौन सा आया, अभी हिरण आया. So gradual, then the hunter comes, डक 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 डक, देखिए कहा है नहीं, ये तो आरो है, ये तो बो है, and then this is coming. So gradually the entire situation was clear to them through dance. And after that, she gave them a story to read, and children became interested to read, because whatever they have saw, whatever they have answered orally, they knew the story, they have understood the story. Now it becomes easier for them to read the story. Even for that matter, music also. Even some Japanese people came, they were showing the stories through visuals. जैसे कि एक के बाद एक होता है ना फिल्म में,
कि एक screen आया, फिर दूसरा screen, तीसरा screen. So the stories were there in different images, and children, they saw that, they understood the story. After that, the story was given to them to read. So now, like when they started reading the story, the teacher was there to guide them. कि now आपने वो story सुना था ना, ये है, ये picture है, ये देखो, ये जो है ना, this is the tiger, it came running, and the deer is afraid and is also running ahead, and all that. So whatever the story is, so the children, they become interested to read the story. Why I am saying is that if you are creating language environment for the children, and you are giving opportunities for the children to have an engagement with language, children's acquisition of language becomes faster. Whether it is first language में भी होता है, but second language because a conscious effort हमें करना पड़ रहा है. So इसीलिए हमें इनको ये सब बताना जरूरी होता है, क्योंकि language उनको हमें classroom में देना होता है. In through multimedia also we have to give them these kind of opportunities to listen to the language and to have an engagement with the language. And then this is children, when they answer, they can use many languages. They can use second language, they can use first language, they can use their home languages. So this multi-languaging also accepted in the classroom situation. The moment you say कि नहीं, तुमको second language में बोलना है, English में ही बोलना है, then children will stop talking, stop speaking. So आप हमें ये ध्यान रखना है कि हमें, if the children are code mixing, if they are multi-languaging, then we must accept it, because first thing is that they have understood, that is comprehension. When I tell the story in English, showing all the pictures, they have understood, but they do not have that language ability to speak in a second language. So I should not penalize them. I should not tell them कि नहीं ये बेटा ये wrong है, because the attempt they are making, all the languages are speaking simultaneously. It is a positive sign, because children learn language by like they make errors in while they learn the language, because second language is English is not their language, so they will commit definitely error, they will commit. So errors are the indicators of learning. हमारे NCF 2005 में भी हमने कहा है कि errors are indicators of learning. If the children are making errors, means they are learning, then they are attempting to speak. So we must allow them to do that. And then we are also like when we say that when they learn the first language, when they learn their mother tongue, when we are moving them towards literacy, we ask the community to come. There will be dance, there will be drama, there will be theater, there will be folk tales, there will be music. So there will be, I mean, in this multilingual situations, all these things are there in the classroom for the children to understand about Bahubhasikta, multilingualism, there are many languages and also many cultures, and simultaneously when they speak, they also talk about their culture and their other cultures. In the same way, when we are asking the children, when the children are developing their second language ability, these things can also come in order to make them understand that there are multiple languages, there are multiple, I mean, that the stories are in, the multiple cultures are there. So the stories that we will take for the children for second language learning, the stories can be from different parts of the country. Different parts of the country. There are many different stories. So we can translate them in the second language, and we can tell the story to the children. So in the process, children, they are exposed to different cultures, different values, and in the process, they acquire also values. Because again, value, you cannot teach them values, but through examples, through stories, we can tell them, we can give them examples of different value systems. Okay, so children, they learn values by looking at the examples, looking at the characters. So when we speak of stories for the children for second language learning, the stories, they have to be I can't say culture specific, but yes,
with some values in it. So the stories may be from different languages. Translated stories we can also we can provide to the children, so that there will be ample comprehensible exposure to the children in second language. If we provide ample comprehensible exposure to the children in second language, again there will be a meaningful interaction, meaningful engagement with language 2, with the second language. So there will be a purposeful engagement have to be there. For that reason, children have to be motivated to build meaningful and purposeful interaction in context. There is a meaningful and purposeful interaction in context, obviously there is a contextual learning. Contextual language learning will also happen simultaneously. So when we say that, for that we can have this is background we can create, and prior knowledge also we can think about कि बच्चों को क्या क्या आता है, what do they know, how do they use language, and based on that we can have a second language learning. As madam pointed out, Professor Usha Sharma, that there is a structural variation. And for example, मैं घर गई थी, so it is subject and object and verb, SOV. Okay, but in English it will be I went home. So it is subject, verb, and object, SVO. So if there is a structural variation, we will not tell the children directly that there is a variation, but if you give them examples and all, gradually they know that yes, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाना घर, ऐसे नहीं कह सकते. I can't say that I went home or I went to the market. I can't say I market went to, or I can't do that. So this will come if children are provided language exposure. And this again, when I said that there is for scaffolding of second language learning, we can have objects from real life. For example, we can have wrappers of products, etc. We can have flashcards, we can have drama, action songs, activities for total physical response. We can also ask them for nature walk. We can ask them for go for nature walk followed by discussions. This is nature work, and for example, taking the children around the school. There are many plants are there. Many things they see when they come from home to school. We can ask them very simple questions. Ki, what did you see when you came when you were coming from home, madam? When I saw मैंने एक cow देखा. मैंने एक छोटा I saw मैंने एक small child देखा. So बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं. And then as a teacher, I said, अच्छा, you saw a cow. Okay, you saw a cow. What is the color of the cow? Ma'am, the cow सफेद था. The cow सफेद, अच्छा, white. So now from the very beginning, because unless if the language is there in the classroom, we cannot progress in second language. So for bringing second language to the classroom in the teaching learning process, the teacher have to consciously bring some words of the second language into the classroom. Otherwise, it will be difficult. So in our focus paper also, we have said that in order to know a language, in order to speak a language, in order to learn reading and writing in a language, is the language exposure has to be there. Informal exposure has to be there from the initial years. So informal exposure the teachers can bring into the in the teaching and learning process of first language also, while dealing with mother tongue also. So let them be multilingual. We call multilingual. Let the second language also come as a language, as one of the languages of the students, and then only we can if the scaffolding is there, scaffolding of mother tongue is there,
scaffolding of all these realias and their visual scaffold, if this is there, then it becomes easier for a child to learn a second language. And second thing is that keep through discussions and through exposure to language in context, and even in the like using the mother tongue, using the first language in learning second language. So children, their identity is reinforced, reaffirmed, and children's language is also first language, second language is reaffirmed, and simultaneously their second language learning is given a kind of what should I say? Importance is given to learning a second language, and using the second language in some of the context, a social context. So this is for that we say that there will be visual orientation hona chahiye. What is visual orientation? The stories that we are going to say, activities that we are going to design for the children, for the exposure of spoken language, these should have some visual impact, some visual, impacts should be there. Visual orientation should be there. Some pictures should be there. Some photographs should be there. Some realia should be there. Then only, there will be, the children will look at the visual orientation, look at the story, look at the words in print, and then they will start learning even the sounds. For example, I gave you the example of thirsty crow. The crow, there was a crow. It was a black crow. It was summer season. It was the sun was there. It was a hot day. So this hot day, and the crow was very, very thirsty. Here we can say that when you are like in summer season, do you drink more water? I said yes, ma'am. Why do you drink more water? Because हमको बहुत प्यास लगता है. Oh, you feel thirsty. So this crow was also feeling very thirsty. So when we say that, like, and when you look at the sound and picture and sound and word correspondence association should be there. When there is a bit difference in pronunciation of English words and the sound and the letters of alphabet. Crow, 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 but there is K is there. Okay. Even for example, cat, 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 K is there. So it is, we do not have to differentiate ki nahi, ye K sound hai, but C hai, isliye K, there is some differences. If we go back for the nitty-gritty of sounds and all that, the children will stop speaking. So in order to make children speak, let us give them the entire story, let them tell the story, and when there is a hop, there is a pot. So प से हम कर सकते हैं, POT, pot, जैसे मैडम ने बताया, प is the initial sound, प is there, parrot is there, then porcupine is there. So प से जितना sound है हम उनको बता सकते हैं, फिर different story के माध्यम में हम उनको बता सकते हैं. So for creating input-rich environment, creating print-rich environment is essential for second language learning as well, because language learning principles are always same. Okay, and I have already told you that language is a skill. Language is a skill subject. Learning the structure of the grammar, learning the words in isolation will not make the children learn a language, acquire a language. So this, for learning a language has to be used. So how the children will use the language? If we create situations, appropriate situations. For example, it is a classroom situation. How we will make classroom situation as a learning environment for second language learning. So we can ask this now, but children, you tell me what are the things that are in the classroom. So they say there is a table, there is a chair, there is a
blackboard, there is a chalk, there is a duster, there is a teacher, we are students are there, there is windows, there is door. So the entire classroom can become a situation for language learning. Okay. After that, if you ask them, now this is the classroom situation, and through I mean, there are many activities match the sentences. Like there is a door, giving a door and classroom situation, and let them match. And then you say this is a door. But what is written? door. The sound आता है. This is door. Door. D. So in a process, let the children use language. जैसे कि मैडम ने बताया कि learning the looking at reading the theories of dance, one cannot learn dancing. You have to practice. So for language learning also, you have to have a lots of practice. Along with the exposure, practice is also required, because when we say learning outcomes, if you look at this is NIPUN Bharat, I think towards the end in annexure, there are learning outcomes are there. These learning outcomes are competency based, skill based. So language, if I'm saying that I am being able to recite a poem well, then I have to recite the poem well with proper pronunciation. For example, there are nursery rhymes. Two little dicky birds sat on a wall. One fell down and one there are like Baba, Black Sheep, have you any wool? Or any nursery rhyme, it makes us recite the poem well and tongue twisting and speaking the language, because you get a training of moving your tongue. So how will you speak the language when you are reciting, when you are telling the stories? Teacher tells the story with proper pronunciation, with voice modulation, with gesture and postures. For example, if I say there is a huge turnip, so with my hand, I said I a huge turnip. Children get a visual image that it is a huge, बहुत बड़ा turnip है. And turnip तो उसमें picture में ही है. So what I want to say is that language is a skill subject, and in order to develop the skills, we have to practice it well. We have to listen to the language. We have to even if you read a particular story for many for 2-3 times and all, you recognize words in print. And for example, as a child, when I was a child, I was very happy when my teacher wrote my name on the blackboard and said कि ये तुम्हारा नाम है. Then I started writing that name, first copying and then started writing. My name is Sandhya. So, children also, when they look at the things in print, they try to write that also. Maybe sometimes they copy it, but yes, if they understand it, if they understand, reading with understanding will also make them to write with a purpose. Writing with a purpose is also there in the NIPUN Bharat document, where it says that we have to write with a purpose. Why? What is write with a purpose? First is that early writing skills, that is scribbling, all is there. Then make use of letter and sounds, and invent spellings. Sometimes children invent spellings, sometimes children invent words also. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर दीक्षित, उनकी ग्रैंड चाइल्ड शी सेड कि पापा दादा मुझे जाना है, ये उसको बोलना था, क्योंकि they were going to the market. Then the child said, दादा मुझे भी जाना है. But she was not ever told that B is with emphasis. नहीं बोला गया था. But she said कि मुझे भी जाना है. उसका मतलब है कि she has heard somewhere, and sometimes she has heard and now she is using it. So if you are giving them print exposure to the children, gradually they will pick up writing skills also. They will start writing. That is why they invent spelling and they also invent writing. For example,
yesterday, I think in the last first session, Madam Meenakshi showed a picture when the child is writing a letter to his mother. It is written, my dear mother, mummy. So my dear is D-I-R, dear. So we do not say that this child doesn't know English, doesn't know a language. But only thing is that she doesn't know spelling. So if she's continuously she is exposed to the spelling D-I-R, it is not D-I-R, D-E-A-R, then gradually she will pick up. Because children, they learn very quickly, number one. Number two is that auto correction, correcting themselves, is going on continuously in every child, in you also, in me also. Because when we learn English, it is also like we can't now also I am auto correcting myself. Some pronunciation I do not know because English is not my language. So any second language learning, it is, I mean, auto correction will go on, but children, they invent spelling, they invent these skills like spelling, writing a particular word. Okay, and second is that when they talk about development of writing skills, it is children also, they make efforts to write in conventional way. आप अगर देखेंगे, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, so आप देखेंगे कि बच्चे जब लिखते हैं ना, सपोज यू शोड देम अ लेटर, कभी उन्होंने लेटर देखा होगा, अगर उनको बहुत गुस्सा आता है तो लेटर लिखते हैं मम्मी के पास या पापा के पास और भाई सिस्टर्स के पास. पहले कुछ ऐसे ऐसे स्क्रिबल करेंगे, देन एक पैराग्राफ में स्क्रिबल करेंगे, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, एंड लास्ट में फिर स्क्रिबल करेंगे. दे डू नॉट नो बट व्हाट दे आर, आई मीन दे नो व्हाट दे आर राइटिंग because it is there in their mind. There's a thought is there, but words are not there. But they stick to the letter writing. ये जो होता है ना, like principles of writing जो होता है कि पहले क्या लिखना है, second page, third paragraph, fourth, ये लिखते रहते हैं. I had that when my child was writing a letter to me, had written a letter to me, but did not find. I wanted to show you that. But they also they try to follow the conventional way of writing, and they also write from left to right. ये नहीं कि right to left लिखेंगे, because they have seen us writing, seen teachers writing, seen seniors writing, I mean siblings writing, so they write from left to right. That is also, they do not commit mistakes, that also. And then they also respond to reading with drawings, words, and meaningful sentences. Sometimes when they read certain things, they understand it, but they do not have these words to express. So what they do is they express through pictures. They express through, I mean, certain like graphical pictures. They through paintings. I'll tell you one thing. I'll give you even bade bacche, younger, elderly children also. They express through this drawing and painting what they understood. I was taking a class with 9th and 10th children of Navodaya Vidyalaya schools. I was teaching them a story like how gradually the entire town is becoming a concrete jungle, and in the concrete jungle the potted plant is crying कि मुझे बाहर जाना है, I want to go out and be in the jungle and grow like a full grown tree. So it is crying. So I asked the children कि आप उसके ऊपर कुछ poem लिखिए, कुछ drawing बनाइए, कुछ करिए. When I left this Navodaya Vidyalaya school, the children presented me with a painting. इस painting में इसमें एक बहुत सुंदर सा tree है. It was a barren tree, and background was a fluorescent red background, and the tree was black in color. Then I asked कि इसमें है क्या? Then the madam, गौर से देखिए. So when I saw, it was 2 drops of tears coming from the tree. So bade bacche bhi, elderly children also, they are using this drawing and painting to express themselves. So children also, they have the ability to express themselves through variety of writings, variety of ways they express. So if the children are expressing and they're using their mother tongue, I'm talking about second language learning. If they, because they do not have much language ability in them, and even words they do not know, so they can do that. Third thing is that they can also write meaningful sentences using using action words
and using, sometimes, for example, there is a sentence, I love banana. So banana ke jagah, instead of writing BANANA, they can draw this picture of banana. So the teacher will know that yes, the child has understood. Child is trying to express. Then our duty is to give them language. Tell them different in a context that there is a banana, this is a bunch of banana, it is yellow in color and ye ho, jab green hota hai to hum kache bhi kha sakte hain. So there are many things we can tell them when we are talking about different languages. And this also I'm giving you, it is, I went to a school and I told them a story. Many stories I told, and they express themselves in different of, this is and I can say that there are writing, this is expression, they're expressing themselves. I told them about a tree and how trees are helpful to us. So here they have in this picture they have told about the tree. And then I told them about Christmas celebration. They wrote like this. So there are many, I mean, I took them to the garden and showed them the flowers and all that. So this, and there was a machli jal ki rani hai, I told them. So they draw this machli. So now they are expressing many things through drawing. And some children who have maybe it is a faulty language, there is a like spelling mistakes are there, but even then they wrote, they expressed themselves so well. And they used mixed languages, they used mixed quotes also. कुछ हिंदी में लिखे हैं, कुछ उड़िया में लिखे, उड़िया वर्ड है, कुछ I mean उनका जो even Sanskrit words I found some children are from like dialects. Like the madam said, there is no difference between dialects and language. From Sambalpuri dialects they have written, some Ganjam dialects they have written, some of them are written the Telugu, but Odia script mein they have written all that. So they are using mixed language. They mixed codes in order to express themselves in writing. So we can, as a teacher, we must not penalize them. We must not say that you do not know language. Rather, we must encourage. The only thing that we can give them, make the children learn language by encouraging them and by giving them more language and creating language environment in the classroom. Then only children will be able to learn the second language. Third is that they write, when they write different purposes in the classroom. They write for different purposes. For example, I asked them, I told them a story about a child celebrating somebody's birthday. So they wanted to say, I said, can you write 2 or 3 sentences on this celebration? I showed them the picture and they wrote, I went to, there is, Sneha's birthday was yesterday. Okay. And I took gift for her. करके balloon बना दिया. So and what kind of gift I asked? This is madam balloon. So because she doesn't know the spelling of balloon, she wrote the balloon, and in Odia she wrote balloon. In we don't say balloon in Odia, we call balloon. So she wrote balloon. So then then I was so happy. I said, children, that means she understood, she knows it, and she can express herself well. If the children are expressing themselves well in a language, uh, in mixed language, then we must appreciate it, we must encourage them, and we must giving them more opportunity to express. Even if they commit errors, I have already told you that errors are indicators of learning. And why our children are not learning the second language in a classroom? Because first thing is there are many issues, many problems. One is that we focus on building vocabulary. We cannot stress on words कि आपको पहले ये word जानना है. If you stress on word, then children will not be able to learn the language. So we must not focus on building L2 vocabulary, but we must focus on giving them language. We ask them to express in language, then give them the stories and all, and this vocabulary, these words will come later. Let them be exposed to language. Let them speak the language. Let them understand the language. And when we give them
like the pictures with words and all that, then they will be able to pick up these words with pictures. Then provide them with stress-free and safe environment. The stress-free and safe environment, I'm summarizing now. Stress-free and safe environment is a must, because these are the things children find when they are learning the mother tongue. It is stress-free, safe environment, encouragement is there, and there is always a pat back कि अच्छा बेटा बेटा ये कह रहे हो नहीं, ये तातो नहीं है, भातो है, इसे भातो खाई भी, don't say like it is this is bhata, this is hot, and so we give them many like we speak like continuously, to make them understand that this is spoken bhata, not tato. Okay, that example I gave in the beginning. Then sometimes reading is devoid of meaning. We cannot ask the children to read mechanically. I mean, if there is no meaning there when they are reading, then the reading is ineffective. And sometimes when we ask them read certain things, it is not contextual. It has to be contextual. It is within the environment of the students. I mean, their own immediate environment. It is relevant to them. It is age specific, level specific, and it should be meaningful. If there is no meaning in reading, only recognizing the letters will not be able to solve the purpose. The fourth thing I want to say is that children are not actively engaged in learning. So the way we are creating conducive atmosphere for the children to learn the first language, the same kind of conducive atmosphere should be created for the children for learning a second language. Children should be engaged in learning. Children should be engaged in language. If there is an engagement with language, then only active engagement with language, then they will be able to pick up language, that is L2. Picking up language is leading to acquisition of language. So we are moving from learning the language consciously to acquire the language naturally. That has to be the movement. That should be the progression. And teachers, they should have a right aptitude, right attitude, willingness to teach the language. If they show interest, if they are creative, if they are imaginative, if they create a very, very stress-free atmosphere, and they give time, because always there is low time on task. What's the meaning of low time in task? Because the low time in task is that teachers are not giving enough time to the children to listen to the language. If you are not listening to the language properly, you will not be able to speak the language properly. And listening, speaking using the contextual appropriacy, and listening with understanding. That has to be done, because for that, for learning a second language, we have to give time to the children to develop these like oral skills, which will again lead to reading and writing skills. And we say that we are giving, we are language is not taught in isolation, and it has to be an integrated skill, and all the skills have to be developed in integration. Okay, so the example that Madam Usha ji gave in the in the first half of this session, she gave two stories. And these stories are their holistic approach is given to the story. You are telling the story, children are listening to the story, children are telling the story, repeatedly you are giving them, you are drawing their attention to the words, you are drawing their attention to the spelling, you are drawing their attention to the letter and sound coordination. So that is, and then you are asking them questions, you are testing their comprehension, and then you are asking them to read, and then gradually you ask them to write. Okay, so this is actually the teacher has to do consciously in the class, in the second language classroom. And we should not make a textbook centric teaching. I'll give you one example from my research.
When I went to find out in Odisha and in the country itself, it was teaching of English in the primary classes of India. I took Odisha. Okay. I went to the primary schools of very, very remote areas, even in the tribal areas I went. I asked their teachers, keep like, how do you teach English to the children? Now we go to the class and we tell the stories to the children. I said, do you tell stories? Yes. And I asked the children, do you love to listen to the story? Yes. What stories you have heard and listened? The teacher told you, Monkey and the Capsular. Then I asked the teacher, which story did you tell to the children? Monkey and the Capsular. And Monkey and the Capsule is the first story in the book, and the children she has told the story to the children. But in order to create a language environment, in order to give language exposure to the children, teachers should read many stories to the children. Otherwise, how will they get language exposure? How will they get create this language rich, input rich environment for the children? When I asked the teacher, have you read? No, madam. What did you read? No, we have. Somebody said I read Gandhiji's Experimented Truth. Somebody said I read because all these things are documented. Okay, and the examples are also given. Then the conclusion is that we are teaching second language in a input poor environment. So we have to, from input poor environment, we have to make it input rich environment. For that, we must go beyond textbook. It should not be textbook centric teaching, because textbook teaching will be demotivating. We must motivate the children. We must make them active learners. We must give them language exposures. And we must make the children talk in the class. We must, that culture of silence, don't talk. That kind of thing should not be there in our mind. That should go from our mind. We cannot make our children silent in the class. If you make the children silent in the class, language development will never happen. And second thing is that, and the other point is that curriculum to teach reading and writing a language is based on scientific evidences. What is that? I have already told you the reading, how we'll start reading. It should be started with listening and speaking. Then the same story, if it is given in print, children will be interested in reading. And reading is again like it is, they will see the words in print. And when they see the words in print repeatedly, that is there, the image is created in the mind, and then they will start writing the language. It becomes easier for them, and they become interested also in writing, because they have listened to the story, they have told the story, they have read the story, and they are writing the story. So it is always this is the best approach to make the children write write with understanding, write with a purpose, and all these things that writing I talked about, those things will be developed if this procedure is followed. And the other thing is that lack of age appropriate reading material. Why I mentioned this point is that when from my research I found out, I'm talking about government schools. I'm not talking about private schools, and I'm also not talking about Navodaya Vidyalayas or central or Kendriya Vidyalayas, because they have a very good library. But in our government schools, I don't know others, but I have found in 95% of government schools, they do not have a library. Forget about storybooks. They do not have a library. In the name of the library, in the principal's chamber, there is an almirah where some science kits are there, some dictionaries are there, and one or two Odia storybooks are there. We have so many students. We are like here, again, the community participation comes here, the people the contribution of the community, of the people, it comes. Now, in the schools that I visited, I asked the community, I asked the parents who are literate, who have read some stories and all. So I asked them to just give me a minute. Anyway, so no,
And then I asked the teachers, I asked the teachers and if they have some old books, old story books, and I brought them and kept in the room. We call it reading corner. So in every school that I visited in 21 districts, the schools we developed reading corners. Students were exposed to even the old books, old magazine, old newspaper. इसे एक string लगा के सब उसको हमने टांग दिए थे. And children in their leisure time they was doing just they're flipping the pages. It's okay. Let them have some idea, some exposure to the print media or to the prints. So it is always important that we must create. Collect appropriate reading material, stories for the children. Now, when I went now in 2 3 months back, I had gone to some schools in Odisha. I found that infrastructure has been developed and there's a computer is there, and then they are being because there is a more school movement. More school means this is the students who are passed out from the school. Now they are contributing, and then multimedia also is there. So stories are also there. So now teachers are being trained to use computer and multimedia to give stories to the children. Many stories are now being told to the children in English, in Odia, in Hindi, and in the areas which are nearer to other states. For example, in West Bengal, Baleswar, which is nearer to West Bengal, nearer to Tamil Nadu, sorry, Andhra Pradesh, and Chhattisgarh. So there are some stories are also in their language. So children are being exposed to many languages and also being exposed to many stories. And then after that, we told the teachers that you take a printout. अगर नहीं हो पा रहा है तो फोटो लेके then you बाहर जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हो. So now teachers are being motivated because gradually they are being exposed to these kind of things and are helping the children to learn not only Odia, also second language English and Hindi. So, and then already I told you that this is even writing is sometimes I saw even in senior classes also. I had gone to Gaya, like DAV school Gaya, and I saw the students are copying the answers from the blackboard in their notebook. I said, why are you copying? So, ma'am, tomorrow is the exam, so we have to appear the exam, and we have to write in the exam. So whatever they have copied, they will learn by heart, and they will next day they will write in the examination, and they will get 10 out of 10. But that is not learning. You are not you are not making the children learn the language. You are making the children copying and learning by heart and passing the exam. Our motto is not making the children pass the exam. Our motto is to make the children proficient user of language. They will use the language appropriately, accurately, and they will speak the language fluently. अगर ये नहीं होगा तो language learning is whatever we are doing, it's all meaningless exercises. So that is why what I have given, this is another thing how to overcome the problems of the second language education is again teachers have to be trained in the basic principles of language learning, literacy development, how from oracy we go to literacy, how L1 scaffolds L2, and English, that also they should know. In all teacher training programs, this should be training modules. Training modules should reflect all this. And the focus is also should be on the socio-emotional learning, because language is not it doesn't survive in a vacuum. Languages are there in the society, and there are social interactions, emotional interactions. So we are social human beings. When I speak language, when I talk to people, obviously my emotion, my love, my intention, all these things will be reflected. So this is we must focus on like socio-emotional learning
and that should be part of our teacher training module. And obviously, curriculum needs to be revised based on NEP 2020. We are talking about medium of mother tongue education. We are talking about home languages. We are talking about Indian languages, like promotion of Indian languages, and we are talking about promotion of English also. So we have to how it can be promoted, how it will be like the new, technology, new techniques of developing this like all these skills, like learning outcomes, how to develop the learning outcomes. It has to be embedded in the curriculum itself. Okay, and then like obviously depending on that, pedagogy has to be revised. Okay, so we are talking about it is integrated pedagogy. We do not teach any skill in isolation. The skills are integrated. When we are talking about developing a skill, so listening, speaking, writing will also come. Writing skill has listening, speaking, reading also in it. So it is development of all skills together. It's a holistic development that we are talking about when we are talking about language development. And definitely there is overlapping and fluid relationship between languages to be understood, because as madam has said, this structures, mostly the Indian language structures of Indian languages are same, almost like this guy it is मैं घर जाऊंगी, is object, the subject, object and verb. Mostly our Indian languages, their structures are same. In Indian languages, some of the words are also same, because cultures are also same. So in our focus paper, we talked about Bhasa Parivar. So we belong to one Bhasa Parivar. So structures and the cultures in some of these cultures are same. Some of the words are same. So these same words, same culture, they can be given told to the children ki in our language is this, in your language is almost similar. And we can also talk about differences also, as madam has talked about. Like there are in some languages there is ling is there, like jaungi, ja rahi hu, ja raha hai. In some other languages, this ling is not there. But yes, when it comes to second language teaching, suppose we are talking about English, the structure has to be different. So this overlapping and fluid relationship between languages, let the children also know. Let the children also know that languages are also like they are from the same parivar, same language family. Okay, and then last is assessment. When we talk about assessment, assessment is same with first language and second language. Only the difference is that there is some differences there in second language, because exposure is little bit different. Because first language, everything is given from the very beginning. They are exposed to language. Second language is conscious. So when we are designing activities for assessment of second language learning, it has to be a bit. It should be language specific, in the sense that, for example, I'll ask the children to write an essay on your pet animal. So in Odia or in their mother tongue, they can write many things. But in English, because it is a second language, because they have they are learning the language consciously, so there will be some, they may not be so fluent. So there will be little variation in assessing the second language and assessing the first language, but the principle is same. For example, we must go for assessment for learning, continuous comprehensive assessment, and it is assessment is integrated in teaching learning process, and this assessment will help the teacher to know where the children are lacking, what they are lacking, what kind of interventions I am going to design. So it is not to test the memorization, it is to test the competency, because we are talking about learning outcomes. We are assessing the learning outcomes. And if through formative assessment, the child is not being able to achieve that learning outcomes, then it is reflecting on the teacher that what kind of activities and exercises she will design, so that the children will be able to achieve that particular learning outcome. Okay,
So this assessment it should be formative, and this formative assessment formative assessment promotes learning, and this formative assessment also ensures positive learning cycles. This regular assessment informs the teacher where the children are lacking, what they are lacking, what are the learning gaps, and this also will encourage the teacher to address these learning gaps immediately, then and there, so that it will get the baggage, the load, that learning, or the load of not learning, not achieving a particular learning outcome will not continue till the end of class 1 or class 2 or all this pre-primary years. Okay, so the formative assessment assesses the multiple skills of children. It is how they speak, what they speak, and the kind of value. Suppose madam talked about inferential learning. When you ask the children, suppose you are in that position of that, suppose you told a story and you say the person, the character helped his father in the field, and in the process he could not do his homework. So what will be your will you go for homework, or when your father is not well you will take him to the doctor? So let the children come out. This is the value system and all that. They will talk about it. Yes, these both the things are important. Whatever, like, let the children be given the freedom to use language, think about the situation, and reply. And but all the time the teacher should be always on the track to know whether the children are achieving the learning outcomes or not. So these learning outcomes are there in the annexure of in NIPUN Bharat. Kindly go through this. It is second language learning का भी अलग दिया गया है, फर्स्ट लैंग्वेज का भी अलग दिया गया है. So आप second language का देख लीजिएगा. And it is again, these learning outcomes are achievable and measurable. How it can be achieved depends on the teacher. How it will be measured depending on the assessment, the kind of assessment the teacher is going to design, the activities that is going to design for assessing these learning outcomes. So I hope now it is I'm coming to the end of this. Thank you so much, and hope it made sense, and you understood how a second language class, second language can be developed in children. Thank you so much. Now over to Vinita, and if there is any question, I'm there to ask. They can ask. Thank you, Professor Sandhya. This was really a very, very enlightening session. And as you also, and there is a very overwhelming response on the chat, the participants are really feeling that these sessions to be useful, very, very insightful, and they have been thanking from so much time earlier that they started thanking us on the chat for these sessions. So definitely they have been very, very valuable, and our participants are very good. Throughout the session they are very, very active. Like, they are not on the passive mode. If they are not speaking, they are very active, and these sessions are liked and viewed by many, many participants. So far we've got more than 20,000 viewers on for this training sessions that is being conducted, and it's only day 4 as of now. I also want to just add to what you were saying, like, you started from the posters of visuals to start with in the class as discussion. So Yes, I yes. also want to reiterate the importance of visual literacy that takes place especially in early years. Children are below age 10, their visual learning is the highest, so they pick up so Yes. many things from this visual learning. So creating that kind of environment around, where we start from interactive contextual pictures,
is very, very useful. Also, children document their experiences, the early experiences, through drawing and scribbling, like you said. And as you Yes. were sharing the example of your child, writing those angry letters, so I also, could relate to my little one, writing that angry letter for me. So if you give permission, I'd just like to share that on the screen. Please, Yeah, please do that. Please yeah. do So that. just give me a. So I don't have right now the access. NIC, can you give me the sharing rights? NIC, Ashwin. Hello, yes, ma'am. Yeah. Can you just see sharing right? Just hold on for a while, please. Yeah. Yeah, you may try, please. Yeah. Now I can. I think it is showing. There is a lot here. Yeah. Can you see my screen now? Yes. Yeah, so this is exactly how Really. Sandhya ma'am was talking about the paragraphs of scribbles. And I have also inscribed those paragraphs of scribbles for us conventional readers. So my little one writes, "I love you too, my friends, and mom not," because it's an angry letter. So yeah. Thank you so much. Because it's really, I mean, when you look at the children, how they learn the language and how they communicate, it's really inspiring, really inspiring. And from that, we can start our own, I mean, teaching the children in the classroom. That's why I said, you are all young mothers and young fathers are also there. So you know how the children are learning language. So from that, you can start, I mean, training your, if you are teacher educators, you can train your teachers also. And you can take, I mean, a clue from there and teach in the class. That's really interesting. Thank you so much, Vinita. Yeah, Any, so if there I is think any we can questions, also fine. take some questions. Yes, we can also take some Yes. questions. If anyone wants to ask a question, please raise your hand. We will unmute you. Okay, I think we can just take a couple of questions from the chat. There was a question in the middle of the session. It said from SPD West Bengal. I don't know like if we still have them with us, but they were wanting the resource person to throw some more light on the experiential learning. How do we connect or correlate experiential learning to the textbook learning? So, for example, in the text, there is a story like there is a poem called The Cloud. I think that is there in the class 1 textbook, Cloud. Okay. So when I say that, I have that anyway. So and if like the poem is, I just tell you what is the poem about. It is about there is the cloud that there in the sky, and they bring rain and all that. Okay. So and the cloud is in the shape of a fish, or the cloud can be in the shape of a tiger or a lion or a mountain or a moon. Because now, like this is there in the text. But suppose I want to create some kind of, I mean, taking the children beyond the textbook and giving them some kind of experience. What the cloud is really looking like. So during summer season, now it is raining, the rainy season,
And I can ask the children, I can take the children out, and then I can show them that this is the sky. See the sky, sky is blue in color. Can you see the cloud? Can you tell me what is the shape of the cloud? And do you know that this cloud, when it becomes heavy, it comes like rain. So now from like taking them out, showing them something real that is in the environment, and then bringing them into the classroom, then they can have, as you rightly pointed out, that the visual literacy. They see everything, they experience everything, then they come back and they will appreciate the poem better. I'll give you one example again from my teaching in class 10 Navodaya Vidyalaya. It was on again. It was on the same poem. How the potted plants are like revolting. So the poem is about this is a concrete jungle, and the potted plants are revolting to come out. So at night they were all they were all whispering how to go out, how to go out. And then when I asked the children, do you know that the potted plants they revolt, they feel that they should go out? Can you understand? Can you experience? Can you feel the kind of agony? Children said, no, ma'am. Then I took them to the principal's room. In the principal's room, there were potted plants, and 20-year-old bonsais were there. And it was the tree. It is like people tree, and it was 21-year-old with all these the roots coming from all the sides, and only 2 leaves were there. I said, now stand there and try to talk to the plant. They said, get to this potted plant or the bonsai. And some said, yes, ma'am, and we found that only 2 leaves are there, and the children, then it is really difficult. It is really pathetic to see that this crooked roots are there. Then after that, I took them out into the garden, and there was a big people tree, only 10-year-old people tree. And we sat there, and I said, now tell me, what did you feel? What do you feel? He said, ma'am, it's such a nice place, and the sun is coming through the leaves, and we find that sun rays are dancing and all that. There is the birds' nests are there, and as if it is there is a new life there in the tree. It is breathing. It is the crown is there. The leaves are so green. Then we came back to the classroom, and I asked them, okay, now can you tell me? Then I asked them certain questions on the poem itself. And because they have experienced all this, they could find out the difference between a potted plant and why they are revolting to go out into the forest. So what I want to say is that this experiential learning can help the children understand whatever is there given in the textbook. So we are taking the children beyond the textbook, giving them experiential learning, hands-on experience that all people are talking about. Give them that experience. Once they experience, they will understand. They will not learn by heart. They will not go for rote learning. If they understand with their language, they will try to express. So understanding, experiential learning will help them to understand the theme of the poem, of the story, of the text better. So for anything, for teaching anything, like we can make the children, this is for example, we talk about realia, we talk about photograph, we talk about multimedia. What is the meaning of that? Because we are giving them experiences. We are giving them language, we are giving them some hands-on experiences, and bringing them back to the classroom and using these experiences in understanding the text. I think that will help us in making the classroom vibrant, making the children understand, making the children appreciate. And once they appreciate, they'll be able to express in many ways. They can express in like question answers. While we answer questions, they can express through poems, creating different. They can compose poems. They can compose. I mean, they can draw. They can paint, and they can also dramatize also. So dramatize also is role play. They can do the role play also. So this experiential learning help them in doing all these activities. And at the end of the day,
they will also learn language because they will be exposed to many things simultaneously. I think I answered the question. Was I audible, Vinita? Yes, I think that was beautifully answered, and with proper example also. So yeah, I think there is one more question on the chat I can see, where the participant is asking about the LOs at ECC level. So when we say ECC level, I suppose they want to ask about the preschool stage. Uh, Yes. well, of course, you all will have to go through the LOs in progression from Exactly. preschool 1 to preschool 3. And they are very Yes, well classes 3. bifurcated, level Yes, wise, exactly. in terms of, and they're Exactly. age appropriate and developmentally appropriate. But if you would like to just share something about what are the key things to focus, like overall in preschool years. If you look at the LOs for second language learning, you will find that in preschool 1, that means 3 plus, it is written that children participate in singing poems and rhymes. How to achieve that yellow? We all know that there are many different, nursery rhymes are there, and there is small stories are there. And then, for example, I gave you the example of I'm giving example of English only because some of the like nursery rhymes I remember. For example, like Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for my master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. So this is again a kind of, this is a nursery rhyme. Okay, let the children listen to the nursery rhyme repeatedly. If the teacher can recite it well with proper pronunciation, with proper voice modulation, even with the visuals, if the teacher can recite the poem well, it is very good. Teacher becomes a resource for the children. Or else, if some teachers, because we can take the help of other teachers who are good in language, in pronunciation, we can ask the child teacher to come and recite the poem with all these realias and with all these pictures. Or else we can record it and play before the students with all these pictures. And the fourth thing is that there are also multimedia, and then there is the YouTube and all. Everywhere you will find these nursery rhymes are being recited with so many colorful pictures and colorful, even motion pictures are also there. So now, if you want to develop this learning outcome, participate in singing poems and rhymes, the first learning outcome of preschool 1, then these are the things that you can take help of, so that your children, they listen to the rhymes repeatedly, and initially they can participate in a group and in a chorus. But we don't go for this chorus because personally I feel that if they can recite individually also, then you can know that how the children are pronouncing, where there is a problem, and if there is a problem, also address the problem, playing the video or audio, or reciting the poem yourself. There is another thing like second, in the preschool 2, again the same, skill, it is little bit, difficulty level has been increased. In that yellow, it is written that attends, participates, and listens to others during conversation. First in preschool 1, it is recitation of the poem and singing the poem, rhymes. And second is, it is participating and listening to others during conversation. So this is the learning outcome. So how to achieve that learning outcome? Suppose you are telling a story to the child. For the same story, for example, Thirsty Crow. Or madam has talked about the mithai, and about this the donkey who wants to
wants to have sweets and all that. English में आप उसको translate कर सकते हो. In उड़िया में, sorry, हिंदी में है. You can translate that into English. So children have listened to it in Hindi, and now they are listening to it in English. It is easier for them to understand. Okay, and understand and appreciate also, and they can also answer to your questions. Understanding, comprehension becomes better. So they will here. Suppose you ask the questions. You have told the story, and you ask the question to the children with all the visuals, and children will participate. They will attend. They will participate because they have listened with understanding. They have listened with comprehension. Now the comprehension is better. And how do you know that they have achieved this? If they answer to your questions well, what the donkey is doing, what does he want, what the cat said, what is the the elephant said. So then if they answer, even it is in one word, if they answer in their own language, in their mother tongue, then you know that this learning outcome is achieved. So gradually, these learning outcomes are, I mean, as Vinita has said, this is developmentally appropriate, and gradually the difficulty level is also increased. Okay, and the third, I mean, in preschool 3, it is written that introduce himself, herself bilingually. So now they have they're like with the in this like I mean this is the learning outcome. Here in this learning outcome, the difficulty level is increased in the sense that now they are introducing themselves like independently. Independently, they are introducing themselves bilingually or multilingually. Here it is written bilingually. We can also talk about multilingually because we are also helping the children, I mean, making the children speak, because there are every class is a multilingual class. They can also speak in one or two languages. Also, code mixing is we have allowed, and NIPUN has also allowed code mixing. So here, if the child is introducing himself, ki I am Ravi. I Ravi. If he says, then it's okay because introducing himself. I Ravi. I like football. I like football khelna. Playing football. I like football khelna. So it's okay because he's introducing and he's also telling his likes and dislikes. So here we can say that we have achieved the learning outcomes. Right? The child is introducing himself or herself bilingually or using multiple languages. Okay. So now for achieving this learning outcome, we can design many activities because all the learning outcomes are, as I learning has been achieved. We can ask them questions. We can ask them I mean their likes and dislikes. We can ask them small questions. We can ask them and we can tell them कि now use these questions and जो answer आपने दिया है उसको मिला के 2-3 sentence में बोलो. Then they will tell that, introduce themselves. So in this way, there are many learning outcomes are given here and listed here. So you can design activities and try to help the children to achieve those learning outcomes. Vinita, is it okay? Yeah, thank you. Thank you for sharing with examples. It will be very useful, and I'm sure very motivating also for the participants now. Go back and look at the LOs, because sometimes in a thick book, when you see that annexure, which itself is a volume of about 50 pages, it can be a very
Hello, good evening, ma'am. Good evening, sir. Ma'am, is the meeting still going on or shall we wind up? No, I think it is on because I'm yet to. Ashwiniji is there. Yeah, ma'am. Actually, Ashwiniji, where is Vinita? She has to close. How the participants will come to know Ma'am, I that this think is over? she had already left, ma'am. How come? I don't know, Is ma'am. it possible? Is it possible to do that? I don't know. Yeah. It's okay. It's okay. So shall I wind up? Yes, ma'am. You may wind up, Yeah. ma'am, please. And thank you so much, participants and our colleagues also, because we are on the same same side of the coin. You are teaching, we are also teaching, and we are also we are all co-learners. And I'm so happy that you all participated with much enthusiasm, and the questions I saw in the chat box are really, good. And hope many questions, because time was short, I could not answer all the questions. But even then, if there is some if you need some help and all, so you can ask me. My 1 minute, Sandhya _ 60 at you can use my email ID if you have any question, if you want any clarification. Thank you so much for this patient hearing. You are all so patient at this, almost going to be 5:42, and you all are there, and that also motivates us to learn more and to to try to enrich ourselves and do something better next time. Okay, so thank you so much, and over to Ashwini. I think Ashwini ji, I think Vinita is back. Yeah, ma'am. Vinita is back, ma'am. So I want Yeah, Vinita to. yeah, thank you. I'm sorry. There was some connectivity issue. My link got disconnected. So yeah, thank you so much, Professor Sandhya Sahu, as well as I also want to extend my thanks to Professor Usha Sharma for conducting this valuable session. It had been really very, very meaningful and effective. And thank you so much for sparing your valuable time and enlightening all of us on this session today. Thank you. Thank you, Vinita. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Ashwini ji. Thanks everybody, all the participants. Thank you so much. Thank you.